की बनाए रखेंगे। कृपया आप जल्दी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। काइंडली रिमेन सीटेड, मेंटेन साइलेंस। Sri Ambrish ji will be coming soon on the stage. Kindly remain seated, maintain silence, maintain your state. Lawan ya. हिमालय की गोद में था वो पला, आया वो धरा पे गूंजा नाद था। हिमालय की गोद में था वो पला, आया वो धरा पे गूंजा नाद था। मुश्किलें जाए ढाल वो बन जाए, विष पिए वो तो महाकाल सा। काफी खाली जगह है, वहाँ भी बीच बीच में काफी जगह है, बीच में जगह ना छोड़िए, सिर्फ आगे के 2 लाइन आपको छोड़ने हैं। जस्ट लीव 2 rows in the starting, else you can sit anywhere. Don't leave empty spaces in between. Kindly keep for. Come ahead, please, so that sadhaks who are coming little bit late can occupy the space behind.
क्या जिंदगी है, परखने विश्वास हर मुश्किल खड़ी है, पर कदम ना थमे, कर समर्पण वो चले, शिव साधारण करे वो ध्यान गंगा। जय हो जय हो जय हो जय हो गुरुदेवा, जय हो जय हो जय हो जय हो गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो जय हो गुरुदेवा, जय हो जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। और एक बार रिमाइंडर है, काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल, ओके, मेंटेन साइलेंस। जल्दी अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लीजिए। काइंडली रिमेन सीटेड प्लीज। Swamiji wait so long. He's also told us to make sure we are on time. So this is the best we can do. Tomorrow we'll adjust. Okay. Okay? But 6 years and the kids are allowed? Yeah. Okay. Just that if they make noise, then they are asked to go out. Like. Okay, but then... और स्वामी जी जो हमें देना चाहते हैं अच्छे से हम ग्रहण कर पाए। We welcome all the sadhaks once again in this Chaitanya Mohatsav Singapore 2024. You all have come from very far, many from different countries. This is a very close gathering, we can say, because we are hardly 300 people here. We will not get this opportunity again. This is really a very historical event. So please maintain your state so that we can receive maximum from His Holiness Swamiji. Whatever he wants to give us, we can get maximum benefit of it. Thank you. अभी थोड़ी ही क्षणों में अमरीश जी का आगमन होने जा रहा है. अमरीश जी will be arriving soon on the stage. हम जोरदार तालियों के साथ अमरीश जी का स्वागत करते हैं. Hello, Jai Atmeshwar. Jai Atmeshwar. I can't. Who is saying Jai Atmeshwar? Who is listening Jai Atmeshwar?
Atma? Is it really Atma, or is it just words that you are speaking? It's Atma. It's our soul. I'll tell you a story. It's part of my life. In 2003, I was at Tata Memorial Hall in Navsari. We had a contest between schools. And one of the participants it wasn't me. One of the participants was a girl, a Parsi girl. Let's call her Nastab. So she was on the stage. She was speaking it really nicely. She conveyed the message really nicely. And then I wanted to congratulate her. What a wonderful speech she gave. And I went back behind the stage so that I can say how wonderful it was, and I'm inspired by you. And behind the stage, I saw her Foi, her aunt, scolding her. And I was shocked. Why is she scolding her? By the way, her aunt was the vice principal of our school. So I respected her as well. And I overheard their conversation. And her aunt said, "Why did you have to cram your speech? Isn't it your favorite topic that you wanted to share? You could have shared it with all the passion that you had in yourself, like with the way you say it in my house about the same things. Why did you do that?" And she said, "I was scared. I did not want to miss any line. It was a good speech. And I wanted to impress everyone." And she said something very important that became part of my life. And she said that when you are on stage and people are listening to you, they don't want to get impressed. They want to become one with what you are speaking. Yes? They want to forget that they exist. They just want to be one with the topic. So it doesn't matter if your lines are impressive or not. The passion should be. And then I grew up. I wasn't good at speaking English. I don't know, still I do speak English good or not. But what I say is what I follow. So this year onwards, there is so many walls that actually stop us from connecting with our people. One wall is Facebook and internet. The another wall is our own perception. The third one is this paper. So when you are expressing something, express it without a concern that how will the person feel. Express with all your passion. So today what we are going to discuss isn't how we should speak, isn't how we should listen, but it's the most important part of our whole carnival of love. Because where there is love, there is there is Swamiji. Come on, one more word. There is, sorry? Yeah, I cannot listen because you are not saying it with passion. So say it out loud. Where there is love, there is passion. Peace. Happiness. Yes. So there is a very good lesson that I learned in yoga practice, yoga asana practice. So one of the yoga master we have here is Swamiji, and then there is another yoga asana master we have Lalitji. And one day he was discussing with me
what he learned from his guru when he was learning yoga asanas. His guru said, people who come to me to learn yogasana, there are some people who just learn it within 6 months, and then there are several people, several hundreds of people who learn it in years and still they fail. The only reason is when I'm speaking, they aren't listening, although they can repeat what I had said exactly as I have said it, but they are not listening. When they are smelling, they are not smelling. When they are looking, when they are doing darshan, they are not doing darshan. It's exactly like how you are cooking your food, and on one of the gas, you have put milk container, to make it hot. And in your thoughts, you don't even see, even if the container is right in front of you, the milk just spills out of it. Because you were thinking, you weren't there. The person who sees wasn't there. Sometimes, when you're listening to your best friend and you are in trouble, you're looking at your trouble, you're listening to your own trouble in your own mind, and your friends talk to you and you just do nodding. Yeah, true that. Now let me share what I want to say. So you're not listening at all. You just want to reply to everything. Similarly, times will come, and times have happened. Within these last so many years, say 20, 24 years, we have listened to Swamiji, but how many of us have really listened to Swamiji? How many of us have really questioned Swamiji using our own mouth, but not using our own self? How many of us have seen Swamiji, although we were right in front of them, and when we come in front of them, we want others to see us with Swamiji, so we just ask for, can we get a selfie, Swamiji? And we ruin the entire moment that Atma brought us with our own doing. We miss the entire chance of what could have happened. So you must be wondering, what should we do about this trouble that our body and mind causes? And the answer is very simple. You can say it out loud. What is the answer? Correct. Why was it so difficult to say? It took around 8 seconds to say the answer. So, if we meditate regularly, we are present, we practice to be present. We are in meditation. So, once again, I welcome you all, and I don't need to welcome you all. You are my family. Singapore is your home as well. So, welcome to your home. Jai Atmeshwar, Jai Baba Swami. जय बाबा स्वामी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो साधक, रिक्वेस्ट है आपको, आप कृपया पीछे बैठ जाइए, क्योंकि जल्दी ही स्वामी जी का सत्र शुरू हो जाएगा। तो बीच में आवाज़ आने से आपको पता है बच्चों पे नेगेटिव अटेंशन आ जाता है, ठीक है। One request to all the sadhaks who are having babies, kindly sit behind. It is a request because we don't want any baby noise to come while Swamiji's discourse is going on, because we know the reason behind it is we don't want any negative attention to come on our babies. Thank you very much for your kind understanding. बहुत बहुत धन्यवाद।
ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। कृपया शांति बनाए रखिए, अपनी स्थिति बनाए रखिए। आज हम स्वामी जी के साथ ध्यान करने वाले हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी है। स्वामी जी का आगमन होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वामी जी का स्वागत करते हैं। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि वच ज्योति वच स्वाहा चूर्भुवस्वः दीपस्य देवता गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि।
गुरु आवाहन करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु तस्मै श्री गुरवे परम पूज्य गुरुदेव और there is a microphone at the front. Kindly note that please do not ask personal questions. Ask spiritual questions that can benefit everyone. Whoever wishes to ask a question, please come to the front. Please ask your question. जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, वंदनीय गुरुमांना कोटी कोटी वंदन आणि गुरुदेव तुम्हाला प्लॅटिनम वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी आज 10 वर्षापासून हिमालयन समर्पण मेडिटेशनचा सराव करत आहे. माझ्या आध्यात्मिक प्रवासात काही अडथळे असतील तर ते जय बाबा स्वामी, क्या आप आपका प्रश्न हिंदी में पूछ सकते हैं? मराठी में कंप्लीट होने के बाद पूछो. आई कैन ट्रांसलेट इट. ओके. माझ्या आध्यात्मिक प्रवासात काही अडथळे असतील तर ते कसे दूर करायचे ते मला सांगा. जेव्हाही मी तुमच्या सानिध्यात आंतरराष्ट्रीय रिट्रीट साठी नोंदणी केली किंवा काही क्षणी ऑनलाईन रिट्रीट साठी पण जेव्हा नोंदणी केली तर मी तुमच्या सानिध्यात येऊ शकले नाही. पण आज या सुवर्णी क्षणी तुमच्या प्लॅटिनम ज्युबलीच्या वेळी 17व्या वाढदिवसाच्या दिवशी मी इथे येऊन उपस्थित राहू शकली ह्यासाठी मला आमंत्रित करण्यासाठी तुमचं खूप खूप धन्यवाद. मी तुमची खूप कृतज्ञ आहे. जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, वंदनीय गुरुमा के चरणों में कोटि कोटि वंदन. दे वांटेड इन हिंदी. स्वामी जी गुरुदेव आपको प्लैटिनम जुबली के अवसर पर खूब खूब शुभेच्छा. मैं 10 साल से समर्पण मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ. मेरी आध्यात्मिक प्रगति में कोई ऑब्स्टेकल हो तो उसे दूर करने का मुझे मार्ग बताए.
जब भी कभी मैंने अंतर्राष्ट्रीय रिट्रीट के लिए आने की रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोविजन की, तभी मैं कभी आ नहीं पाई। पर आज आपके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुझे आपने आमंत्रित किया, इसीलिए मैं आपका मनपूर्वक आभार मानती हूँ। मैं रुजिता संभाजी ठाकुर शिकागो से आई हूँ, यूएसए। थैंक यू। Her question was that she has been practicing meditation for 10 years now. In the past, she has registered for events but has not been able to attend them. And today, she has managed to come. And she is also requesting Swamiji to give her guidance that if there are any obstacles in the spiritual path, then may he provide some guidance. सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। My salutations to all pious souls gathered here today. सर्वप्रथम तो आज थोड़ा स्पष्ट करता हूँ कि ध्यान में एक उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए 12 साल लगते हैं। First of all, I want to clarify this point that to attain a very high spiritual level in meditation, one takes 12 years. लेकिन ये मैं पहले बताता तो सब साधक भाग जाते। But if I was to tell this at the very beginning, then all the sadhaks would run away. लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जिनको 12 साल हो गए कम से कम उनकी तो भी एक अच्छी स्थिति बनना चाहिए। But now when I look back, then those who have been meditating for 12 years, then at least they should have a good spiritual state. देखिए प्रत्येक साधक कोई ना कोई समस्या कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके इस जीवन में आया हुआ है। So all the sadhaks have come onto this path with some or other problem. वैसे आपका भी पास्ट लाइफ अच्छा नहीं है और पास्ट लाइफ की इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। So your past life is also not good, and the effects of your past life are on your subconscious mind till today. ये 12 साल में तो निकल जाना चाहिए। So in these 12 years, it should have gone away. और प्रश्न आता है फिर क्यों नहीं निकले? So the question is, why did that not happen? क्योंकि साधना ही नियमित नहीं थी। Because the meditation was not regular. दूसरा ये आपकी समस्या नहीं, ये सर्वसाधारण साधकों की समस्या है। पकड़ छोड़ करते। This is not just your problem. This is a problem for all the sadhaks. They do meditation irregularly. So they will do it, then they'll stop. They'll do it, they'll stop. अभी हाल ही में जब साल मुबारक का दिन था ना, उस दिन मैंने सब साधकों का स्थिति चेक किया था, क्यों नहीं प्रोग्रेस हो रही, क्यों नहीं प्रगति हो रही। इसी कारण ये अनियमितता है। So recently there was the Sal Mubarak Day, the New Year Day in India, and I checked the state of all the sadhaks to understand what their state is and what is creating obstacle in their spiritual progress. And I found that the main issue is irregularity. ये केवल आपकी समस्या नहीं, ये हजारों साधकों की समस्या है कि जिनकी इतने साल बीतने के बाद में भी कोई प्रगति नहीं हुई। This is not just your problem. This is the problem of thousands of sadhaks that they have not progressed because they are not regular in their meditation. कारण क्या है? ध्यान को जितना महत्व देना चाहिए ना उतना महत्व दिया नहीं। What is the reason for this? We are not giving meditation the importance that it deserves. वास्तव में ध्यान आपकी दिनचर्या का एक अंग होना चाहिए। Actually, meditation should be a part of your daily routine. जैसे खाना खाते हो, नहाते हो, सोते हो, ये रेगुलर करते हो कि नहीं? ऐसा ही ध्यान होना ही चाहिए। Just like you eat, you sleep, you bathe every single day regularly. That is how you should do meditation. ये Every day. नहाने और खाना खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन खाना नहीं खाया चलेगा, एक दिन नहाए नहीं तो चलेगा, लेकिन ध्यान रेगुलर करो। Meditation is more important than eating and bathing and sleeping. If you do not eat for one day, it's okay. If you don't bathe for one day, it's और also दूसरा? okay. But meditation should not miss a day. दिन प्रतिदिन ना ओरा बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। अब मेरे तक पहुंचने के लिए आपकी एक स्थिति चाहिए। आपकी स्थिति नहीं होगी तो आप मेरे ओरा में नहीं आ सकते। So my state is also in getting higher and higher day by day. And I reached at a state that if your state is not good, you will not even be able to reach in front of me. Only if you have a good state will you be able to meet me.
हम देखिए ना, इस कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा तो खूब साधकों की थी, कितने पहुंच पाए? So just look at it, that there were so many sadhaks who had the desire to attend this program, but just look at how many were able to actually attend it. ऐसा कहा जाता है ना, गुरु सानिध्य बहुत कीमती है, किसी भी कीमत पे उसको पाओ। It is said that the proximity of a guru is a very costly thing. You attain it at any cost. जैसे गुरु माँ ने अभी उदाहरण दिया था ना पारिजातक के फूलों का, उनका समय काल बहुत कम रहता है, एक दिन में वो मुरझा जाते हैं। Since the Guru Maharaj had given an example of some flowers, the flowers that bloom only for a day, then after a day, they are no more. दूसरा, उन फूलों की तुम खुशबू लो मत लो, वो अपनी खुशबू देते ही रहते हैं ना। Whether you take the fragrance and of those flowers or not, the flower will keep on distributing its fragrance. ठीक वैसे ही गुरु का भी जीवन काल कम रहता है, उसका कार्य क्षेत्र बड़ा रहता है। In the same way, the Guru's life is of a short period, but their area of work is very vast. तो उसके जीवन का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। So every moment of his life is important. अब आज आप आए हो, अब क्या करना चाहिए? So you have come here today, so what should we do? नहीं, ये आपको नहीं कह रहा हूँ, ये सब साधकों को ही कह रहा हूँ। I'm not just saying you alone, I'm telling this to all sadhaks. आप तो केवल एक माध्यम है। You are just a medium. वास्तव में जब भी जीवंत गुरु का सानिध्य मिले ना, तब ये मत देखो वो क्या बोल रहा है। So whenever you get the proximity of a guru, do not look at what he is talking about, what he's saying. जीवंत गुरु का जब भी सानिध्य मिले ना, ये मत देखो वो कौन से कपड़े पहन के आया। Whenever you get the guru's proximity, do not look at what type of clothes he's wearing उसके क्रियाकलाप क्या है, आपका ध्यान कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। or what are his actions. Your attention should not be on any of these things, क्योंकि गुरु देखने की चीज ही नहीं है, because a guru is not one to be seen. गुरु सुनने की चीज भी नहीं है। A guru is not one to be listened to. गुरु वो शरीर है जिस शरीर के भीतर वो आत्मा है, जिस आत्मा के साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है। Guru is that body, the body to which millions of souls are connected. तो सबसे अच्छा बात है कि उस आत्मा का सानिध्य प्राप्त करो ना। So the best thing is to attain the proximity of those souls. आपका चित्त उनके शरीर पे नहीं, उस शरीर के भीतर की आत्मा पे होना चाहिए। So your attention should not be on the physical body. Your attention should be on the soul within that body. आप चित्त उस आत्मा पे रखो ना, तो ऑटोमेटिकली फिर मालूम पड़ेगा वो आत्मा कौन है, आपका उससे क्या संबंध है, सारे रिलेशन पता चलेंगे। So put your chitt on the soul within that body, and you will come to know from within what your relationship with that soul is. और गुरु के पास भी ना माया रहती है, वो कभी भी उधर आपका ध्यान जाने ही नहीं देगा। And the guru is also surrounded by illusions. He will not let your chitt go on inwards. वो कितनी भी इधर उधर की बातें करे, आपका ध्यान उधर जाना ही नहीं है। So it doesn't matter what he is talking about. Your chitt should not go on these things. आपका ध्यान केवल और केवल उसकी आत्मा के ऊपर जाना चाहिए। And your chitt should always be only on his soul. तो आत्मा को अनुभव कर पाए, आत्मा के चैतन्य को अनुभव कर पाए, तो उस जीवंत गुरु के सानिध्य का कोई उपयोग है, अन्यथा व्यर्थ। Only if you are able to experience that soul and recognize that soul, that is the best news of the Guru's proximity. और आत्मा से संबंध आपका स्थापित हुआ ना, तो धीरे धीरे उसके सूक्ष्म शरीर तक आप पहुंच सकते हैं। And once the connection to that soul within that body has been established, then your connection to the subtle body is established as well. दूसरा, जो कुछ अनुभूति हुई है, जो कुछ अनुभूतियां आती है, ये सब सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आती है। स्थूल तो केवल एक माध्यम है। So whatever experience that you are getting, all the spiritual experiences that you get, they are as a result of the connection with the subtle body. The physical body is just a medium. तो जो जब जागो तब सवेरा। So whenever you wake up, it is morning. तो इतने साल बिता दिए, अब जाने दो, अब तो भी जागो, अब कम से कम अब नियमित ध्यान करो। ध्यान नियमित होना ही चाहिए। एक दफे खाना नहीं खाया चलेगा, एक दफे नहाए नहीं चलेगा, सोए नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान नियमित होना चाहिए। So you have spent so many years, it's fine, let it go, that's in the past. From दूसरा now on, make your meditation regular. Even if you don't eat for a day, it's fine, but meditate regularly. दूसरे ध्यान रखो, ये साधना के अंदर सांप सीढ़ी का खेल है। So just remember that within this spiritual practice, it's like snakes and ladders. जितनी भी अच्छी अनुभूति आई, जितने भी अच्छा अनुभव आया, तो भी स्थायी नहीं है।
Whatever good experiences you get, no matter how good they are not permanent. कभी भी फिर फिसल करके नीचे आ सकते हैं। You can slip and fall down again at any तो moment. जो साल बीत गए वो बीत गए, आगे का देखो, आगे तभी कम से कम रेगुलर ध्यान करो। So in the past you may have fallen down. That's fine. It's in the past. Now look forward and do your meditation. जैसे कोई दिवाली में लाइट लगाते हैं ना, वो बंद चालू बंद चालू बंद चालू होते रहते हैं, ऐसे तुम लोगों का ध्यान रहता है, ध्यान करते हो छोड़ते हो करते हो और छोड़ते हो। So it's just like when we have the lights, the fairy lights during Diwali, those ones that flicker on and off, on and off. That's how some of you meditate. So make it regular. कोई समस्या आती, कोई प्रॉब्लम आती है तो खूब करते हो, प्रॉब्लम दूर हो गई तो छोड़ देते हो। So whenever you have a problem, then you start meditating. When the problem is solved, then you stop meditating. लेकिन सोचो ना, अगर नियमित ध्यान किया तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। So just think about it, that if you meditate regularly, then you will not get any problems at all. और ये आपके माध्यम से मैं सारे साधकों को ही बता रहा हूँ जो ये कार्यक्रम भी देखते हैं। So I am telling all the sadhaks through your medium, all the sadhaks that are watching this program today. ठीक है, नेक्स्ट। Next question, please. जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी। कृपया अपना प्रश्न संक्षिप्त में पूछिए और हिंदी में पूछिए, सभी साधकों से नम्र निवेदन है। धन्यवाद। मैं पहले हिंदी में पूछूंगा और मैं बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करूंगा। Jai Baba Swami, so kindly request for those who are asking the questions, please ask your question in a very short form, in 1 to 2 lines, which is very clear. So it is easy for Swamiji to understand the question. And please to allow for translation, only ask your questions in Hindi or English. गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मेरा छोटा सा प्रश्न है हमारे आसन के बारे में। ध्यान करते वक्त जब हम आसन में बैठते हैं, तब शुरू में तो आसन में आप जैसे पहले कहते हैं वैसे ही बैठते हैं, लेकिन जैसे ऊर्जा प्रवाह मस्तिष्क में जाता है तब गर्दन पीछे झुक जाती है और आसन थोड़ा पहले से अलग हो जाता है। जाहिर है हमारी खराब स्थिति के कारण ही होता होगा, क्योंकि आपकी तो ऐसी स्थिति होती नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी हमारी स्थिति हो, गर्दन पीछे झुकती वगैरह हो, तो क्या हमें सतर्क होकर उसी समय अपने आसन को स्थिर करना चाहिए हमारे ध्यान लगने के लिए, या ऊर्जा प्रवाह को खंडित न करते हुए जैसी स्थिति है उसी स्थिति में आधा घंटा बैठना चाहिए? हमारे ध्यान की अच्छी स्थिति के लिए क्या ठीक रहेगा? गुरुदेव, ये मेरा छोटा सा सवाल है। मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करें गुरुदेव। His question was that when we are sitting for meditation, we sit in the pose that Swamiji has taught us. But sometimes it happens automatically that our head may fall backwards and we are not sitting straight anymore. So the question is that should we just continue to sit in whichever position that our natural body sits in, even with the head backwards, or should we, as we become aware of it, should we adjust our pose again and sit straight? साधारणतः ध्यान जब अपन करते हैं तो अपना चित्त शरीर पे नहीं होना चाहिए। So ordinarily when we sit for meditation, our chit should not be on our physical body. जब चित्त शरीर पे नहीं है तो गर्दन मुड़ रही है, कैसे पता चल रहा है? So when our chit is not on the physical body, how do we come to know that our neck or head is falling backwards? देखिए, जब विशुद्धि चक्र वीक रहता है ना, तब जाके इस टाइप का अनुभव होता है। So when the Vishuddhi chakra is weak, that is when one experiences this state. तो अपने को उसको ठीक करने का भी कोई कोशिश नहीं करना चाहिए कि गर्दन सीधी करें, कुछ नहीं करना है। So we should not do anything for it. We should not even straighten the neck. Just do nothing. क्योंकि कुछ भी करने जाओगे तो फिर शरीर स्तर पे आ जाओगे ना। So because whenever you try to do and adjust it again, then you will come on the physical level. और दूसरा, अपने को गर्दन झुक रही ये भी समझ में नहीं आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है इसका मतलब हम शारीरिक स्तर पे ध्यान करें। So in meditation, we should not become even aware or conscious that our neck is bending, our head is bending forward or backward. Because when we do become aware of it, we are at the physical level. शुरुआती के दिनों में कई साधकों का ऐसा होता है, लेकिन बाद में धीरे 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 सीधी हो जाती है। In the beginning, many sadhaks will experience this, but later on that will go away as well.
तो ईश्वर अपन ने ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. So we should not pay attention to this a lot. ये कुछ दिन की समस्या है बस. This is a problem for only a few days. That's all. Next. Next question, please. Just a reminder to everybody that please do not ask personal questions. We are here, we have a unique opportunity to be in Swamiji's presence, to receive the energy that he is giving us. So let us ask spiritual questions that will help us in our spiritual progress and will also benefit everyone else. So please refrain from asking any personal questions and ask spiritual questions only. हे बाबा स्वामी, नमस्कार गुरुमा. Guide me in progress. स्वामी जी, उनका प्रश्न ये था कि कृपया मार्गदर्शन करें, आध्यात्मिकता में कैसे प्रगति करें. वो अपनी नजर में गिरी हुई है तो दुनिया की नजर में कभी नहीं उठ सकती. You have fallen in your own eyes, so you cannot rise above in other people's eyes. ऐसा क्यों है? Why is it so? देखिए, आत्मग्लानि या गिल्टी फीलिंग अपना खुद का निजी भाव है, उसको दूसरा कोई भी ठीक नहीं कर सकता. The feeling of guilt, the guilty feeling that we have is our own personal feeling. No one else can fix it. ऐसा आप क्यों महसूस करती है कि आपके अंदर कुछ कमी है? Why are you feeling that there is something lacking within you? क्या कमी है? What do you feel is lacking within you? ध्यान में रखता नहीं होगा. You may not even be getting a good meditation when you sit. कभी वाइब्रेशन महसूस हुए? Have you ever felt vibrations in your meditation? અને आपको वाइब्रेशन आए भी ना तो भी महसूस नहीं होंगे क्योंकि विशुद्धि खराब है. So even if you have received vibrations when you meditate, you may not sense them. You may not be feeling them because your Vishuddhi chakra is weakened. लाइफ में सक्सेस मिली है, You do not have success in your life either. ये सब का संबंध एक ही जगह से. This is all related to one thing. आप जितना स्पष्ट बताइए ना उतना स्पष्ट मैं मार्गदर्शन करूंगा. The more clearly you will say what it is, the more clearly I can give you guidance. Speak what you're feeling. In the past, पहले रो लो फिर बाद में बसा. You can cry a little bit, it's fine. Take your time. guys, in the past, and I can't see things clearly. I'm very guilty towards my parents. उनका चित्त भूतकाल में बहुत जाता है और वो क्लियरली सोच नहीं सकते स्पष्ट हिसाब से और उनको गिल्टी फीलिंग अपने माता पिता के लिए आता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी भूल की है लाइफ में. नहीं, विशुद्धि का प्रॉब्लम है मेरी. So your Vishuddhi chakra is weakened.
दूसरा माता पिता से बात आया, अभी गोवा के शिविर के अंदर एक लड़की अपने माँ के साथ आई थी, मतलब उसकी चित्त में उसकी माँ थी और माँ मरे 4 साल हो गए थे। So you've spoken about parents. So I remembered one incident. So recently in Goa, one girl had come with her mother. और वो लड़की नहीं आई थी, लड़की की माँ उसको लेके आई। Um, she had come. They hadn't come together, the mother and daughter, because she had passed away 4 years ago. But the girl hadn't come, but the mother had come, keeping her in the chitta. नहीं मतलब ना, माँ मर गई थी लेकिन ये रोज खाना बना देती, उसको प्रसाद चढ़ा देती, ऐसा करके सदैव वो माँ की आत्मा को पकड़ के रखा हुआ था उसने, इतना अटैचमेंट था। So even the mother had passed away 4 years ago, the girl was still remembering the mother every day. She would put food for her and flowers for her and keep remembering her every day. And she had her mother in her chit all the time. और उसके बाद में उसको मुक्ति नहीं मिली थी, उसको गति नहीं मिली थी। So the mother had passed on. Her soul hadn't passed on because मैंने उस लड़की को समझाया कि तू प्रकृति के बीच में हस्तक्षेप कर रही है। So I explained to the girl that you are interfering in the course of nature. जैसे तेरी माँ मरी ना, ऑटोमेटिकली तेरा माँ का रिश्ता खत्म हो गया। So just as your mother passed away when she died, then automatically your relationship with your mother has ended. तो उसको अगले गति को जाने देना था। So you should let her go when her soul move forward. तूने अटैचमेंट के कारण 4 साल से उसको पकड़ के रखा था। Because of your attachment, you have held on to her for the last 4 years. अगर तू पकड़ के नहीं रखती तो क्या होता, वो दूसरा जन्म लेती, वो 4 साल की लड़की होती। So if you hadn't held on to her, what would have happened? She would have moved on. She would have taken birth, and she would even be a 4-year-old girl by now. दूसरा ना, थोड़ा ना तुम लोग जो 12वां 13वां करते हो या कुछ करते हो ना, तो इसके थोड़े अर्थ भी समझो ना। So the second thing is that you guys you perform rituals when people die. After 12 days, after 13 days, there are certain rituals that are performed. But first, understand the meaning of these rituals. व्यक्ति मर जाने के बाद में जो करते हैं क्रियाक्रम, उसके अर्थ समझो थोड़ा। So all the rituals that are done after a person has died, please understand that a little bit first. जो पंडित जी मंत्र बोलते रहे ना, मंत्र को जरा अर्थ को समझो ना। So when the priest is chanting the mantras, the chants, understand what those chants mean. वो मंत्र में कहते हैं, हे माँ, तू पहले मेरी माँ थी, अब तू मेरी माँ नहीं रही, मैं तेरा बेटा नहीं रहा। So in the chants, in the mantras, they are actually saying that, oh mother, you used to be my mother, now you are not my mother anymore. हे माँ, तू ये परिवार के सदस्य थी, अब इस परिवार के सदस्य नहीं रही, तो अगले गति को जा। Oh mother, you used to be a part of this family before, a member of this family. You are now no longer a member of this family. Now you move on. हे माँ, तू मर चुकी है और मरने के बाद में तेरा और मेरा संबंध खत्म हो गया है, अब तू मेरी माँ नहीं रही। Oh mother, you have died now. Now yours and my relationship has ended. You are no longer my mother. तो प्रत्येक मंत्र में प्रार्थना की जाती है उसको कि तू अगली गति को जा। So in every mantra, the prayer is said so that they may move on. इसका ना दोहरा लाभ है, एक तरफ तुम माँ की आत्मा को समझा रहे हो कि अगले गति को जाओ, अपना अटैचमेंट खत्म करो। So there are two benefits of this. First is you are telling your mother that your relationship has ended and now mother to move on to the next birth. और दूसरी ओर अपने आप को समझा रहे हो कि ये मेरी माँ थी, अब मरने के बाद में ये मेरी माँ नहीं रही। And on the other hand, you are also consoling yourself that this was my mother before, but now she is no longer my mother. हम ना कर्मकांड करते हैं, मंत्र उच्चार करते हैं, उनका अर्थ नहीं समझते। We generally perform rites and rituals and chants, but we don't always understand the meaning of them. तो मृत व्यक्ति को पकड़ के रखना प्रकृति के बीच में हस्तक्षेप है। So to hold on the attachment of a dead person is interfering in the course of nature. देखिए, जैसे ही व्यक्ति मर जाता है ना, उसके बाद में तुम्हारा उसका रिश्ता भी खत्म हो जाता है। So just as a person dies, immediately your relationship with them ends as well. माँ और बेटी का रिश्ता क्या है? शरीर का। जब शरीर खत्म हो गया तो रिश्ता कहाँ से रहेगा? So the relationship between a mother and a daughter is a physical relationship. So when the physical body doesn't remain, when the mother has died, then there is no relationship. इस बात को समझो। To understand this, रिश्ता शरीर का था, शरीर खत्म होने के बाद में वो रिश्ता भी समाप्त हो गया। this relationship was of the physical body.
When there is no physical body, then the relationship is ended. फिर भी हम अगर रिश्ता रखते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, क्या होते हैं, उसके आत्मा को हम पकड़ के रख रहे हैं, उसको अगली गति को नहीं जाने देते. But when we hold on to this relationship and continuously remember it again and again, what are we doing? We are holding on to that soul and we are not letting the soul move on. एक्चुअली इसीलिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि मैं मेरे जीवन में खुश हूँ, मैं मेरे जीवन में प्रसन्न हूँ, अब तुम अगली गति को जाओ. And that is why we should always pray for people who have died, that I am happy in my life, I am satisfied in my life. तो उनको अगली गति मिलती To है, your next life. तो उनको अगली गति मिलती है, आगे की So गति. then they move forward and they move on with their journey. और दूसरा, आत्मग्लानि तुम्हारी निजी समस्या है, तो तुमको ही छोड़ना पड़ेगी ना, दूसरा व्यक्ति थोड़ी आके छोड़ेगा. So the guilty feeling is your own personal feeling. You will have to get rid of it yourself. और इसके कारण ध्यान में वाइब्रेशंस भी नहीं मिलेगी, जीवन में सक्सेस भी नहीं मिलेगी. And because of this guilty feeling, you will not get feel good vibrations in your meditation. You will एक not. बात के कारण कितनी सारी समस्या तुमने इकट्ठा कर ली. So it is just this one thing that is causing problems in your life. दूसरा, पॉजिटिव सोचो ना कि आज मैं स्वामी के सामने गई थी, मेरे को प्रश्न पूछने का अवसर दिया, तो कहने मतलब एक अच्छी बातें को प्रयास करो तो गिल्टी फीलिंग दूर होगी. So think about positive things like today I have gone to the program, I got a proximity of Swamiji, I got to ask him a question directly. Think about these positive things. जैसे अपन पॉजिटिव बातें सोचते हैं ना, अपने गिल्टी फीलिंग कम होती. Just as we think positive things, then the feeling of guilt will reduce. कहाँ से आई हो? Where have you come from? Singapore. Singapore से ही है. तुम स्पष्ट बात नहीं कर सकती क्या? रोते रोते बोलने का है क्या? ये जिंदगी भर ऐसे रोते रहते. Will you continue crying for the rest of your life? Just talk a little bit clearly. My left side is always painful. My heart always feel very painful. I don't know. I think a lot. I can't stop. I can't be in the present. उनको विचार बहुत आते हैं और वो बंद नहीं कर पाती है और प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं. The heart chakra. उनको The हार्ट में पेन भी हो रहा है, दर्द हो रहा है. क्या हो रहा है? पेन, दर्द. आज है तुमको? आज है क्या तुमको? Do you have a heart? ऐसा नहीं है. एक्चुअली अपनी हीन भावना अपने को ही छोड़ना पड़ेगी, उसकी से अब कुछ नहीं रास्ता है. कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुमको तुम्हारी मदद खुद करना पड़ेगी. Your emotions. You will have to get rid of these emotions yourself. No one else can help you do it. You will have to do it yourself. और उसी भी क्लियर करने का एकदम आसान मार्ग है, रोज आधा घंटा आकाश की तरफ देखो. And the best way and the simplest way of clearing your Vishuddhi chakra is to do sky gazing for 30 minutes every तो day. आकाश नाशवान नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा विशुद्धि भी जो है ना वो चक्र अच्छा होगा. So the sky is eternal. So whenever we do sky gazing, our Vishuddhi chakra clears automatically. और रोना छोड़ दो, रोने वाले लोगों के साथ कोई नहीं रहता. Now, stop crying because no one likes to be around people who cry a lot. चलो आगे. Next question. और दूसरा ना, तुम लोग प्रश्न पूछने आते हो ना, उसके पहले तो ये जन्म कुंडली पहले मेरे पास आ जाती. Whenever it comes to ask the question, before you even come to ask the question, I come to know all of your past. पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन. पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन. और स्वामी जी, आपको जन्म दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं. मेरा ये प्रश्न है कि शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां की वजह से आध्यात्मिक प्रगति अटक रही हो ऐसा लगता है. और दूसरा ये कि कुछ भी कार्य करने पहले से डर ही लगता है, जैसे कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना डर लगता है कुछ भी कार्य की शुरुआत करने के पहले. कृपया जो भी ठीक हो, जो भी हमारे लिए अच्छा हो, मेरे लिए जो भी ठीक हो, वो मार्गदर्शन कीजिए. थैंक यू. So our question is that it could be because of physical or mental problems that progress is not happening, and whatever she tries to do, she feels a lot of fear. So she questions herself of whether this is going to turn out well or not, and she's constantly questioning. So if Swamiji can give some guidance, whatever is appropriate.
कितने साल से ध्यान कर रहे हो? How long have you been meditating for? अ, अ, 2018 शिरडी शिविर से मेरी ये समर्पण की यात्रा शुरू हुई, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां चलती रहती है कि कोई दिन ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ। उस चीज She's been meditating. इनका आवाज मेरे को सुना ही नहीं आता, ऐसा क्यों? माइक के पास आके नजदीक से वो क्या बोल रही थी, सुना ही नहीं आता। 2018 में जो शिरडी शिविर हुई थी, उसी शिविर से मेरी ये समर्पण की यात्रा शुरू हुई। लेकिन शारीरिक बीमारी कुछ ना कुछ चलती रहती है, शारीरिक या मानसिक, तो उसकी वजह से रेगुलर मेडिटेशन नहीं हो पाता है। कितने जगह विश्वास करती हो? So her answer was that she started her spiritual journey in 2018, but because of some or other physical problems or illness, she's not able to meditate regularly. कितने जगह विश्वास करते हो? How many places do you believe in? स्वामी जी सिर्फ आपके ऊपर। नहीं, मेरे ऊपर करती तो ये स्थिति नहीं होती। The answer was only Swamiji, and Swamiji's response is that if you believe only in me, क्योंकि मेरे ऊपर करने से मेरी स्थिति तेरी स्थिति होगी, कहाँ है? so if you believe in me only fully, then whatever state I have, you would have the same state. तेरा विश्वास कहीं पे भी नहीं। We do not have full faith anywhere. विश्वास ना हम जितना एक जगह रखेंगे उतना वो स्ट्रांग होगा, उतना मजबूत होगा। The more faith we have, the more stronger we will be. जैसे मेरा विश्वास है कि परमात्मा मेरे भीतर है, बस ये पूर्ण विश्वास। So just as I believe that Paramatma is within me, तो उससे क्या हुआ कि मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई, परमात्मा को नहीं ढूंढा। so what happened then is that my search for Paramatma came to an end. दूसरा, मेरा कुछ अच्छा हो इसलिए मैं अंगूठियां नहीं पहनता, रुद्राक्ष नहीं पहनता, मालाएं नहीं पहनता, कुछ नहीं पहनता। So secondly is that I believe that nothing wrong will happen to me, so I don't wear anything to protect myself. क्योंकि साक्षात परमात्मा मेरे भीतर है, तो मेरा बुरा क्या हो सकता है? Because Paramatma himself is present within me, then what wrong could happen to me? तो अगर मेरे पे विश्वास हो तो तेरे को भी ये फीलिंग आती ना। So if you had full faith on me, then you would also have this feeling. और निगेटिव थॉट क्यों आते हैं इतने? Why do you get negative thoughts? सब जीवन पूरा बुरा ही गया क्या? Is your entire life bad? जीवन में कोई अच्छी घटना नहीं घटी? Do you not have any good incidents from your life? तो उसको याद कर ले। So remember those. एक्चुअली क्या है, जितने हम बुरी बुरी बातें याद करेंगे ना, जैसे कोयले की लकीर है, उससे ऐसे एक बार खींची, 2 बार खींची, 3 बार खींची, तो उतनी वो काली 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 होती जाएगी। वैसा है तेरे जीवन की बुरी घटनाएं, बुरे व्यक्ति तो बार 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 याद करेंगे तो क्या होगा, वो उनका स्ट्रॉन्ग अस्तित्व हो जाएगा। So just and if you continue to remember those bad incidents from your life, then they will become darker and darker. दूसरा, अपने विचारों का अध्ययन करना चाहिए, हम कौन से विचार करते हैं। You should observe in your thoughts, what type of thoughts you are getting. एक डायरी लेना चाहिए, डायरी में आज कौन कौन से विचार आए सब लिख के रखो, उसके 8 दिन बाद डायरी पढ़ो, तो तुमको तुम्हारा मालूम पड़ेगा कौन से विचार करते हैं। So keep a diary and write down every thought that you get. After 8 days, look at that diary to see what kind of thoughts you're getting. तो सदैव निगेटिव विचार करते हैं, ऐसा क्यों? You are thinking negative always. Why is that? जीवन में अच्छा कुछ नहीं घटा, Have you never had any good incident happen in your life? तो उसका भी विचार क्या करना। So think about those good things as well. विचार करना सोच, आज से चालू कर। So you can start from today. और दूसरा, स्वामी जी ने मेरे को निगेटिव विचार करने को मना किया है, इसको याद रखना, तो ये चेंज होगा। So remind yourself that Swamiji has refused me to have any think negatively from now on. Always remind yourself of that. दूसरा ध्यान रखो, तुमको मैं एक अच्छी स्थिति में पहुंचा हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने कितने पापड़ बेले ये मालूम है क्या? So you are seeing me in my proximity, and you're seeing me having reached a very high spiritual state. But I have gone through a lot of hardships to get here as well. मेरा ही नहीं, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति किसी उच्च शिखर पे बैठा हुआ अपने को दिखता है, लेकिन वो कितने बार गिरा है मालूम नहीं रहता ना। It's not just me. Any successful person, you will see them at the highest, sitting at the high peaks, but you don't know how many times they have fallen down. तुम लोग क्या कुछ दिन ध्यान करते हो, तुमको लगता है एकदम सब अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। So you people meditate for a few days and then you expect that everything should be rosy and well.
कई बार हम ऊपर गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, ऊपर चलते रहता है। But it happens that sometimes we go up, then we fall down, we go up and we fall down. It happens all the time. एक्चुअली कितना भी अप डाउन हुआ ना, तो वे अपनी साधना नहीं छोड़ना चाहिए। So it doesn't matter how much up and downs happen, we should not stop our spiritual practice. तब हजारों प्रयत्न करते करते जाकर के अपन उस स्थिति में पहुंचते। So it's only after thousands of trials that we reach that state. दूसरा, आज मेरे इस कार्यक्रम में बताने की बहुत इच्छा हो रही कि बहुत सारे साधक कर्म मुक्त अवस्था तक पहुंच गए। So today it's my desire. So today it's my desire to let all of you know that there are many sadhaks who have attained that state of karma-free state. देखिए, ये कार्य प्रारंभ किए 30 साल हो गए। So this, I have started this 30 years ago. तो 30 साल के अंदर जो साधकों ने नियमित ध्यान किया ना, वो उस अवस्था तक पहुंचे। So those sadhaks who have meditated regularly for the last 30 years, they have attained that state. तो मेरी स्थिति उस टीचर जैसी है, जिस टीचर के क्लास में कुछ लड़के मेरिट में पास हो गए। So my state is like that of a teacher. The teacher, some of those my students have passed with merit. सारे लड़के मेरिट में होंगे, ये तो अपेक्षित ही नहीं था ना। So I didn't have any expectation that every student must मेरे have merit. जीवन के उस मुकाम पे पहुंचा हूँ जहाँ पूर्णतः संतुष्ट हूँ। So I have reached that state in my life where I'm completely satisfied. अब दूसरा, आप बोलोगे ऐसे लोग पहुंचे, हमको मिलते क्यों नहीं? So you will ask that these people who have attained that state, why do we not meet them? जब तक तुम्हारी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी उस स्तर तक नहीं होती ना, तब तक वो आपको मिलेंगे नहीं। Until the frequency of your vibrations doesn't reach a high state, you will not even get to meet these people. और मिले आपके पास में बैठे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। And even if you meet them, they may be sitting next to you, you will not recognize them. क्योंकि वो कोई ढिंडोरा थोड़ी पीटते कि हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। Because they do not announce it and exhibit it that we have reached this वो state. भीतर से महसूस करते कि जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहा। But they feel it from within that there is nothing else left to attain in life. मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो गया। So my objective in life is तो ऐसे तृप्त आत्माएं कई साधक साधिका हैं। So there are many sadhaks and sadhikas who are satisfied and have reached that state. तो मेरे को छोड़ो, तुम उन तक तो पूछो पहले। So leave me alone, but you reach to them first. जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी होती है, वैसे वैसे वो लोग आपके संपर्क में आ सकते। So as your state will improve, you will also come in contact with these people. ठीक, नेक्स्ट। Next question, please. Thank you, Swamiji. Baba Swami, Baba Swami, Oma. My question is about thoughts. Last time I could ask a question, you say, about my fears, and you say I should stop thinking because you told me. And I practice it, and sometimes it helps, but sometimes my thoughts are like compulsive and I cannot stop. And then I wonder, you say also, I cannot fight with my mind, I cannot fight with the thoughts. So you say also, I can watch them. So what is the difference with stop thinking and watching the thoughts? स्वामी जी, उनका प्रश्न ये है कि पिछली बार जब वो एक कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने अपने विचारों के बारे में प्रश्न पूछा था और आपने बताया था कि विचार करना बंद करो। तो ये कुछ हद तक तो कर रही है कि विचार इतने सारे नहीं आते, लेकिन कभी कभी आते हैं तो वो बंद नहीं कर पाती। तो आप ये भी कहते हो कि विचार मत करो, विचार को देखो। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि विचार करना नहीं देखना है, वो क्या है? पहले उसको पूछो, वो दुनिया वही चला रही है। Are you running the whole world yourself? Pardon me? Are you looking after the whole world yourself? Do you have the responsibility of the entire world on your head? No. ये दुनिया भर के विचार ये करती, But you have thoughts of the entire world. और कहाँ विचार बंद हुए? So your thoughts have not stopped. प्रयत्न भी नहीं किए। You have not tried to stop them. एक्चुअली क्या है,
विचार को खुद को कोई ताकत नहीं होती. So thoughts don't have any power of their own. विचार को कोई खुद की कोई शक्ति नहीं होती. The thoughts don't have energy of their own. अच्छा, उसके बाद में जैसे हम विचार करते हैं ना तो हम उसको ताकत देते हैं, हम उसको शक्ति देते हैं. But when we think, then we are giving the thoughts energy. तो जैसे ताकत देते हैं क्या होता है, फिर दूसरा विचार आता है, दूसरा आया तो तीसरा आता है, फिर लंबी लाइन लगी रहती है. So when we think, then we are giving it energy, and when we give energy, then after one thought, the next thought will come, and then the next. एक ना ट्रैफिक पुलिस का चित्र अपने घर में टांग के रखो, रोज उसको अगरबत्ती दिखाएगा. So put a photograph of a traffic policeman in your home, and you look at it every day. तो वो देखो सबको देखता है, वो कुछ करता है क्या, कुछ नहीं करता. So the traffic policeman, he just keeps looking at all the vehicles and all the traffic coming and going, but he's not doing anything. वैसा कोई भी विचार आए ना, विचार को देखो, करो मत. So in the same way, do not start thinking, but if you get thoughts, just observe them, that what माने type of thoughts you get. विचार अलग होना चाहिए, आप अलग होना चाहिए. So the thought should be separate and you should be separate. जैसे आपको एयरपोर्ट का विचार आए, अच्छा मुझे एयरपोर्ट का विचार आ रहा है क्या, ऐसा आपको विचार आना चाहिए. So for example, if you get thoughts of the airport, then you should have that awareness that, okay, I am getting thoughts of the airport. आपको ऑफिस का विचार आए, अच्छा मुझे ऑफिस के विचार आ रहे हैं क्या. And if you get thoughts of the office, then you should be aware that you are getting thoughts of the office. शॉर्ट में ये कि विचारों से आपका अस्तित्व अलग होना चाहिए, आप विचार करने मत लग जाओ. So in thought, your existence should be separate from the thoughts. आप जब विचार करने लग जाते हैं तो क्या होता है, इनडायरेक्टली आप विचारों को शक्ति देते, ताकत देते, फिर और आना चालू है. So when you start thinking more and more, indirectly you're giving it energy, and then more thoughts are coming. तो विचारों को देखना और विचार करना, इन दोनों में अंतर है. विचार जब हम करते हैं ना तो हम उसको शक्ति देते हैं, हम उसको ताकत देते हैं, हम उसको एनर्जी देते हैं, क्योंकि चित्त उसमें डालते हैं ना. So when we are thinking, we are indirectly giving it energy. And then more thoughts keep coming and more thoughts keep coming. So we ourselves are giving it energy. So just observe the thoughts. Don't start thinking. तो विचार जब हम देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम अलग रहते हैं, विचार अलग रहते हैं. हम दृष्टा के जैसे ट्रैफिक पुलिस देखता है वैसे विचार को देख रहे हैं, विचार कर नहीं रहे. So when we are just observing our thoughts, then we are separate and the thoughts are separate. And like a traffic policeman, we are just observing these thoughts, but we're not actually doing the thinking. ये ना एक प्रकार की प्रैक्टिस है, ये करते 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 होता है. It is a type of practice. So you will be able to do it once you continuously practice and over a period of time. जैसे राजस्थान में वो लड़कियां अपने सर के ऊपर 5-5 पानी के अंडे भर के जाती है और कोसों चलती है, चलती भी रहती है, शहरी से बातें भी करती रहती है. Very far places to collect some water, and they have 5 earthen pots on their heads, and they are talking and laughing and walking as well, but their full attention is on those pots. The pots don't move at all. They're very still. ठीक इसी प्रकार से वो 5 अंडे पे चित्त रखती है, आप अपने 1 अंडे पे चित्त रखो. So they are keeping their attention on the 5 pots above their head. So you can keep attention on 1 pot. तो क्या होगा, आपका चित्त उन विचारों में नहीं जाएगा. So what will happen is that your chitt will not go into those pots. और आप विचारों को देख सकेंगे. प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करते होते होता है. आपने तो शुरुआत ही नहीं की अभी. So it happens with practice that you start observing these thoughts. You haven't even started the practice yet. So it happens over time. So practice it gradually. दूसरा फालतू विचार करना छोड़ दो, आप दुनिया भर के विचार करते हो जिसका आपका कोई संबंध नहीं. So stop thinking about the entire world. You're having useless thoughts. और विचार लिख के रखो ना एक डायरी में, तुमको दिखेगा कितने बेवकूफ तरीके में कितने विचार करे फालतू. So whenever you get any thoughts, write them down in a diary and then look at them, and then you will realize how meaningless those thoughts are. तो जो भी विचार आते हैं ना वो करने के पहले लिखो, बाद में तुमको दिखेगा तुम कितने फालतू विचार करते. So whatever thoughts you get, you write them in a diary, and then you read that later, and you will come to know of how useless your thoughts are. और कितने दुनिया भर के विचार करते. Then you're thinking a lot of everything around the world, जिसका आपका कोई संबंध ही नहीं. even things that have nothing to do with you. थोड़ा अकेले रहना सीखो ना. So learn to be in isolation a little bit. देखिए अब अकेले रहना सीखोगे ना, आपके खुद के विचार बहुत कम है, आपके ना आसपास के लोग आपके दिमाग में बहुत सारे विचार डालते. So when you stay in isolation a little bit, alone, then what happens is that our own thoughts are very less. But when we are mingling with other people, then their thoughts are influencing us as well, and we get more thoughts. ये इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम सबको ही बता रहा हूँ. एक आधा घंटा एकांत में बैठना सीखो ना. So whenever you get any thoughts, write them down in a diary and then you will realize how meaningless those thoughts are. और कितने दुनिया भर के विचार करते.
So I'm not just telling her, I am telling all of you seated here today that learn to stay in isolation for at least 30 minutes. आधा घंटा ऐसा बैठो कि आपको कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, So for that half an hour, sit in such a way that you are not with any. आधा घंटा आप टीवी नहीं देख रहे हैं, You are not watching the TV in that 30 minutes. आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, You're not reading a book in those 30 minutes. गाने नहीं सुन रहे हैं, You're not listening to any music in those. सीटी नहीं बजा रहे हैं, You're not whistling. गाना नहीं गा रहे हैं, You're not singing in the. ऐसे एकांत में बैठना सीखो ना, फिर आपको अनुभव आपको कम विचार आएंगे, क्यों? वो खुद के आपके विचार कम है, लोग ही आपके अंदर विचार डालते हैं। So if you sit like that for 30 minutes, then gradually in that isolation, then you yourself will realize that you have started getting less thoughts. तो ऐसे एकांत में बैठना सीखो ना, Because it is other people's thoughts that increase our thoughts as well. So I don't have to stop. दूसरा आकाश की तरफ देखना चालू करो, आकाश की तरफ देखोगे ना तो भी विचार बंद हो जाएंगे। And secondly, do some sky gazing as well. When you do sky gazing, then automatically your thoughts will reduce. लोग पागल बने ही समझेंगे कि आप आकाश की तरफ देखो। So even if people think that you are mad, you still do it. वो सोचे, उनको सोचने का। Let people think what they want. तुम आकाश को देखो तो विचार धीरे धीरे कम होंगे। Do some sky gazing and gradually your thoughts will decrease. तो कुछ प्रयोग करके देखो ना। So try this. So it's not I have to stop them. It's not that I have to stop the thoughts. I have to watch it. हाँ, तो उनका वो कह रहे हैं कि उनको विचार बंद नहीं करने हैं ना, सिर्फ उनको देखना है। बंद नहीं कर, बंद किया तो फिर शरीर लेवल पे आ गए ना। Yeah, so you don't have to stop your thoughts because when you try to stop your thoughts, you're on the physical level. So you. एक बार ना मद्रास में एक न्यूजीलैंड के साधक ने मेरे को पूछा कि जो लोग ध्यान करते हैं उनका चेहरा ऐसा खींची हुई प्लास्टिक की थैली जैसा क्यों रहता है? So once in Madras, Sadak asked me, from New Zealand asked me that why do people who meditate, their face looks so stretched and like a plastic bag? मैंने उसको बोला जो ध्यान करता है उसका चेहरा नहीं रहता, जो ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं उसका होता है। So I told them that those people who meditate, their face is not like that, but those people who are trying to meditate or making that effort, their faces look like that. हम देखते हैं ना दो बॉक्सर एक दूसरे को फाइटिंग करते रहते हैं। Yeah. It's like two boxers are fighting each other, right? तो उसी प्रकार से यहाँ दो नहीं, एक ही बॉक्सर अपने को ही मारते रहता है, एक इधर से मारते रहता है, विचार कर रहा है, विचार रोक रहा है, विचार कर रहा है, विचार रोक रहा है, मतलब फिर फाइट कर रहा है, तो उसका तनाव चेहरे पे आ जाता है। So it's the same when we are making that effort to meditate, that we have the two fighters in our head. One is doing the thinking, one is trying to stop the thinking. So they're fighting each other. फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, विचार रोकने का भी प्रयत्न मत करो, वहां पे भी मैं आ गया। So I am trying to make it clear again that do not even try to stop your thoughts, because when you try to stop, वो भी शारीरिक प्रयत्न है ना। because trying to do something is also physical. दूसरा आज एक स्पष्ट करता हूँ, मन की एकाग्रता करना ध्यान नहीं है। So the other thing I'm clarifying today is that the focus of the mind, that is not meditation. वास्तव में कुछ नहीं करना ध्यान है। Actually doing nothing is meditation. जैसे होता है ना, कई लोग मंत्र जाप करते हैं। Many people chant mantras. हाँ, या किसी देवता का जाप करते हैं। Or they chant the name of a god. तो इसका अर्थ क्या है? वो मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते, बिजी कर देते, फालतू विचार नहीं आना चाहिए, राम 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 ऐसा। So what they are doing in essence is that they are diverting their mind elsewhere. So they keep chanting Ram 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 to divert. लेकिन मन रिलैक्स कहाँ हुआ? But their mind is not relaxed. वो कहीं ना कहीं तुमने उसको डाइवर्ट कर दिया, बिजी कर दिया। So you've just diverted your mind and kept it busy. तो ये रिलैक्सेशन नहीं है। So that is not relaxation. रिलैक्सेशन वो है कि जिसमें मन तो है लेकिन विचार नहीं। Relaxation is that in which there is nothing, there are no thoughts, there is no chanting. और ये ध्यान से संभव है। And this is possible through meditation. I'm very happy I have asked this question because in UK you say stop thinking and say as I told you, and you say just Swamiji told you to stop thinking, and so I was worrying with this, so I'm happy that I could ask. Thank you. यूके में उन्होंने प्रश्न ये पूछा था कि उन्हें बहुत विचार आते हैं, तो आपने कहा कि ऐसा अगर कभी विचार आए तो यही अपने आप को याद दिलाना कि स्वामी जी ने कहा है कि विचार मत करो। तो आज उनको थोड़ा स्पष्ट से समझ में आ गया। Yeah. Next question, please. I just have one. Yeah. I can one. अभी भी एखादा विचार है।
You still have a thought now? You still have thoughts? Yeah, I just want to ask if I can do the same thing when panic and fear attacks come. I also just watch them. उनका प्रश्न ये है कि कभी कभी उनको एकदम पैनिक जैसा डर जैसा लग रहा है, तो क्या उस समय भी वो वही करे कि उसे वो भावना देखे? सारी प्रॉब्लम खूब ज्यादा विचार करने से इतने लोगों को चित्त में रख के बैठती। All your problems are related to the many thoughts that you get. Yes. और दुनिया को चलाना छोड़ दो। So let go of the whole world. You're not running the entire world, right? परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुमाँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम भूषण सामंत है और मैं न्यू जर्सी यूएसए से आया हूँ। स्वामी जी, मुझे इसकी पूरी कल्पना है कि आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हो, तो एक बात तो मैं कह लूं कि आपके समक्ष खड़ा रहने की एक मौका मिले और आपसे निकले हुए शब्द को मैं अनुभव कर सकूं, इसलिए मैं कोई ना कोई प्रश्न लेके आपके सामने आते रहता हूँ। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कोई एक अच्छा अनुभव आता है या कोई अच्छा काव्य घटता है तो उसे सबको बताने की बड़ी इच्छा रहती है, और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद इससे कोई ईगो ना आ जाए। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। So his question is that sometimes we get good experiences and we have this desire and we get very excited that we want to share these experiences with other people. But there is also this fear that the ego should not come, that we should not get ego because of that. So please guide us for further spiritual progress. हम अगर अपने शारीरिक स्तर पे किसी को बताते हैं ना तो उसमें ईगो आता। When we tell someone at the physical level, then the ego comes. दूसरा, आप अपेक्षा करते कि आपने बताने के बाद में सामने वाले ने उसको मानना ही चाहिए, तो ईगो आता। So if you have this expectation that when you tell someone, then the other person you're telling should believe in it, then the ego will come. अब अगर नैसर्गिक रूप में बता रहे हैं, सामने वाला सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ठीक है, माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी। But if you're just telling naturally, whether the other person is listening or not, or is believing or not, then it doesn't matter. तो उसमें कोई ईगो नहीं आता। Then there is no ego in that. आप मेरे प्रवचन सुनो ना, मेरे कितने सारे अनुभव बताते रहते हो, तुम सबको मानते ऐसा थोड़ी, तुम लोग सोते रहते हो, फिर भी मैं बताते रहता हूँ। So you listen to my discourses and I keep sharing so many experiences of mine, and some people believe it and some people don't, and I still continue to share all those experiences. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप बड़े शिविरों में देखो मैक्सिमम लोग सोते रहते हैं और फिर मैं बोलते रहता हूँ। And I'm not making a joke. You can also see for yourself the videos of the big programs. Maximum people are sleeping in those programs. They don't even listen. माने मानने की तो बात हो रही हो, तो सोते ही रहते। So believing aside, they don't even hear anything because they're sleeping. उसके बावजूद भी अपेक्षा रहित होकर बताते रहते। And despite that, I continue to talk without any expectation. तो ऐसे निस्वार्थ भाव से बताया ना, तो कोई ईगो नहीं आता। So when we are sharing these experiences without any expectations, with a selfless feeling, then there is no ego. और दूसरा, सामने वाला माने नहीं माने उसका प्रश्न है ना। So whether the other person is believing it or not, that's their problem. अपन काय को अपेक्षा रखे कि वो मानना ही चाहिए। Why do we have the expectation that they should believe it? और वो ना ऐसे अनुभव बताने के लिए नहीं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से वो अनुभव निकलना ही। Because the experiences are not to be said consciously; it should just come out of you automatically when you share. ऐसे ऑटोमेटिकली निकला ना तो कुछ नहीं होगा। So when it happens automatically and you start sharing, then their ego doesn't come. अपने को ईगो ही क्यों याद आता है, ये समझ में नहीं आता। So why do we even think of ego? और अपने अंदर नहीं है तो याद ही नहीं आएगा। So if it is not within us, then we will not think about it. दूसरा ना, ईगो जहाँ समाप्त होता है ना, वहाँ ध्यान शुरू होता है। So whenever the ego comes to an end, meditation starts from there. जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं ना, मेरा ध्यान का स्थिति कैसा है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल खराब है। So many people ask me that what is the state of my meditation, and I tell them it is very bad. क्योंकि वास्तव में ना ध्यान की स्थिति वो स्थिति है जहाँ पे मेरी स्थिति कैसी है वो भी होश नहीं रहता। Because actually a good state of meditation is one where one doesn't even ask that question that how is my meditative state. तो जो आपको अच्छा लगता है वो अनुभव बताओ,
लेकिन सामने वाला माने नहीं माने, वो आपका क्षेत्र नहीं है। So whatever you feel good, the good experiences, you can tell people and share it with people, whether they believe it or not. नेक्स्ट। Next धन्यवाद। question. गुरुमाँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय आत्मेश्वर, जय बाबा स्वामी। एडवांस में हैप्पी बर्थडे स्वामी जी। आप जो कहते हैं काफी कुछ उस रास्ते पे चलने का ट्राई करती हूँ, इसलिए हर शिविर में क्वेश्चन पूछने खड़ी नहीं रहती हूँ, क्योंकि आप बोलते ना आपने कभी आपके गुरुदेव को क्वेश्चंस नहीं पूछे, समर्पित ही रहे। कृपया मार्गदर्शन करिए। She said that she has not asked many questions in other programs because Swamiji always says that Swamiji has never asked his gurus any question. He has always been surrendered, and the gurus, whatever guidance the gurus have given, he has received that. So she has said that Swamiji, please guide me. आपके आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है आत्मग्लानि का भाव। The obstacle to your spiritual progress is the feeling of guilt. जब 10 लोगों के अंदर आप रहती है ना, तो आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है। कुछ कमी है क्या? When you're amongst 10 people, then you feel that something is lacking within you. Is there anything lacking? तो मुझे तो कुछ कमी नहीं दिखती, लेकिन तुम्हारी भावना है, उसको क्या करूं? I cannot see anything lacking within you, but that is your feeling. What can I do about that? और अपने जीवन में ना सफलता, सक्सेस मिलने के लिए सभी क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, उसमें विशुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। To attain success in one's life, in any area, in any sphere, whether it is in spirituality or in their daily life, career, etc., the Vishuddhi Chakra plays a very big role in attaining success in one's life. ये आत्मग्लानि का भाव, गिल्टी फीलिंग, ये हमारे लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक है। So this feeling of guilt creates an obstacle in our success. इसके ना कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से सभी कारण दूर हो सकते हैं। So there could be many reasons for that, whatever the reasons, but all these reasons, the core reasons for this happening, go away with meditation. जैसे माँ के पेट में जब बच्चा रहता है ना, ये अभी काय को मैं प्रेग्नेंट हो गई, अभी नहीं होती तो अच्छा था, अभी घर बनाना बाकी है, नौकरी में परमानेंट होना बाकी है, अभी नहीं होना था, ऐसा अगर वो सोचती है ना, तो भी बच्चे की गिल्टी फीलिंग हुए, तो विशुद्धि चक्र खराब हुए। When a mother is pregnant and there is a baby in her womb, and the mother, when she finds out that she's pregnant, she has this feeling that why am I pregnant now? I still have to do this. I still have to build a career, build a house, settle my life. And if she has this guilty feeling, then this affects the baby. The baby is not able to receive that energy of the Vishuddhi chakra. दूसरा घर में ना कभी माँ बाप बोलते तू गधी है, तू गधी है, तू गधी है, ऐसा बोलते, लेकिन वहां तक नहीं, लेकिन जब अपन अपने आप को गधी समझने लग जाते हैं, फिर विशुद्धि चक्र पकड़ते। So in the house, your parents, your mother may be telling you like you're useless or something like that. So whatever they're saying doesn't affect you, but when you start believing in that, then it starts affecting your Vishuddhi chakra. तो ऐसा कोई बात है क्या? So is there something like that? ऐसा तो है नहीं स्वामी जी कुछ भी। फिर ऐसा फीलिंग क्यों है? So why do you get the feeling? You said no, there's no such thing. And Swamiji said that why do you still have those feelings? सबकॉन्शियस में कुछ हो तो पता नहीं। And she said, कहीं तो कोई घटना हुई होगी ना। और दूसरा क्या रहता है, अपने को सब बातें नहीं समझती, लेकिन इतना तो आज स्पष्ट कर। और दूसरा ना, ये सब चीजें कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता, कोई भी मशीन से नहीं बताए जो ये बता सकते। So she said that there could be something in her subconscious that maybe Swamiji can guide. And Swamiji said that there could be some such incident in the past. So something like this, no doctor can diagnose or tell us about it. तो ये ना आध्यात्मिक क्षेत्र के मापदंड कुछ अलग है। So there are no machines that can measure something like this. So this is measurement, the spirituality, the measures of spirituality are very different. अच्छा क्या आज आपने प्रश्न पूछ लिया, कम से कम आपको पता तो चला कि क्या प्रॉब्लम है। So it's a good thing that you have asked this question today. So at least now you know what your problem is. तो आज से आत्मग्लानि करना छोड़ दो, कोई भी ऐसा अपने अंदर भाव आए ना, उसको वहीं के वहीं रोको, कि उसको आगे मत बढ़ने। So from today, do not have the feeling of guilt within you. If you ever get such thoughts, then stop it there and don't let it progress. दूसरा ये कोई एक दिन में नहीं आता है। So this does not happen within one day. कांस्टेंट जब
अपन ऐसा महसूस करते ना, आत्मग्लानी आत्मग्लानी आत्म, तब जाके उसका स्टेज निर्माण है। So when we continuously have these feelings of guilt day by day, then after a long period of time, it develops a stage. ये विशुद्धि की बात नहीं, ऐसा आज्ञा चक्र का भी स्टेज रहता है, नाभि का भी रहता है, हृदय का भी रहता है, सबके स्टेज रहते हैं। It is not just of the Vishuddhi chakra, this problem. It is also of the Agya chakra also has a stage, the navel chakra also has a stage, the heart chakra also has a stage. अपना आपके विचारों का अध्ययन करो तो आपको मालूम पड़ेगा ये क्यों निर्माण हो। Now study your thoughts, then you will come to know why this is happening. देखिए, जैसे ना एक आदमी को स्कूटर लेने का है, स्कूटर लेने का है, स्कूटर लेने का है, ऐसा वो 3 साल तक से विचार कर रहा है। So for example, if a person is thinking that they want to buy a scooter, and they've been thinking like that for the 3 years. तो ऐसे 3 साल विचार करने के बाद में उसने स्कूटर खरीद भी लिया। So imagine after 3 years they have purchased that scooter. लेकिन ये 3 साल में उसमें नाभि चक्र का स्टेज निर्माण कर लिया। But in the 3 years they have developed a stage in their Nabi chakra. हाँ, उसके बाद में स्कूटर मिल भी गया तो भी वो तृप्त नहीं होगा। So even if they acquire, they buy that scooter, they will not get any वो satisfaction. सोचेगा मारुति कार लेने की, मारुति कार लेने की। Then they will start thinking that I want to buy a Maruti car, I want to buy a Maruti car. और मारुति कार लेने की भी तृप्त नहीं होगा, फिर और बड़ी कार लेने की। So then even if they buy their Maruti car, after a while they won't be satisfied. They सभी want लोग a bigger car. अपने विचारों का अध्ययन करो ना, एक ही प्रकार के विचार कांस्टेंट खूब दिनों तक अगर रहे तो उस प्रकार का स्टेज हमारे अंदर निर्माण होगा। So you all observe yourselves also, analyze for yourself that if you get constantly one single thought every day constantly, then a stage will be developed. जैसे हम नाटक देखने को जाते हैं ना, हम देखते हैं कि स्टेज एक ही रहता है, लेकिन वो नाट्य गृह के अंदर कभी कौन सा नाटक रहता है, कभी कौन सा नाटक रहता है, नाटक बदलते रहते हैं। Whenever we go to watch a performance, the stage remains the same. It's just that the act will continuously change. हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे अंदर विचारों का स्टेज निर्माण हो जाता है। एक विशेष प्रकार के विचार सदैव आते रहे खूब चल रहे, तो वो स्टेज निर्माण कर जाते हैं। So whenever we get some specific type of thoughts continuously for many years, then a stage is developed, is created. उस स्टेज पे फिर नाटक बदलते रहते हैं। And then the acts on those stage keep changing. कभी स्कूटर रहेगा, कभी मारुति कार रहेगी, कभी बड़ी कार रहेगी, बदलते रहेगी। Sometimes it will be a scooter, then it will be a Maruti car, then a bigger car, but it will the stage will remain. तो ऐसे गिल्टी फीलिंग के विचार कांस्टेंट कई दिनों तक रहे होंगे, तब जाकर के विशुद्धि का स्टेज निर्माण हुआ। So you may have had these guilty feelings, thoughts of guilt for many days. That's when the stage was created in your vision. दूसरा, नियमित साधना से धीरे धीरे सब चेंज होता है। So with regular practice, spiritual practice, this problem will go away over time. नियमित साधना करो, नियमितता का बहुत महत्व है। Meditate regularly. Regularity is very important. एक बार ना मैंने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में शिविर लिया। Once I took a program at Ahmedabad Medical College. उसके बाद में उसके 65 डॉक्टर दांडी के आश्रम में मुझे मिलने को आए। After that, 65 doctors came to meet with me in Dandi ashram. उसमें कई डॉक्टर बोलता, स्वामी जी मेरे को ना रविवार को छुट्टी रहती, रविवार को मैं ऐसे लोगों से ध्यान करता हूँ, मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी क्या? So one of the doctors said that Swamiji, on Sundays I have a day off. So on Sundays I meditate for 8 hours. So will I progress spiritually? मैंने उसको बताया, मोबाइल होता है ना, शरीर को मोबाइल समझो, और मोबाइल को चार्ज करने के लिए अगर 2 घंटे में बैटरी चार्ज होती है तो उसको रात भर घुसड़ के रखो तो क्या ज्यादा चार्ज हो जाएगा? So I told him that take the mobile for example. If you charge and it takes 2 hours for the mobile to charge, but you put it you plug it in for overnight. So will it charge any more than its maximum capacity? ठीक इसी प्रकार से एक दिन अगर 8 घंटे ध्यान किया तो कोई प्रगति होगी क्या? नहीं होगी। So in the same way, if you just meditate for 8 hours in one day a week, then will you progress? No. आधा घंटा इनफ है, आधा घंटा नियमित करो, नियमित महत्वपूर्ण है। 30 minutes is enough, but do meditation regularly for 30 minutes. तो दूसरा, अपेक्षा रहित होकर करो, ध्यान लगना ही चाहिए, ये आपका क्षेत्र नहीं है। And secondly, do it without any expectations, not even the expectation that you should get a good state of meditation. आपका ध्यान क्यों छूटता? ऐसे ध्यान लग ही नहीं रहा, छोड़ दे। So why do you stop meditating? That you feel that you don't get a good state of meditation after a while and then you leave it. नियमित तो ध्यान करने बैठना ये आपका क्षेत्र है, ध्यान लगना चाहिए, ये आपका क्षेत्र नहीं है। So your area of work is just to sit for meditation regularly every day, whether you get good state or not. जैसे आपको समझाना मेरा क्षेत्र है, आपको ये मेरा क्षेत्र नहीं है। So that
to explain this to you is my area of work. Whether you listen to it, that's yours. तो उसी प्रकार से आधा घंटा नियमित बैठो ना, ध्यान लगे नहीं लगे आपका क्षेत्र नहीं है। So in the same way, just sit for meditation for 30 minutes every day, whether you get a good state of meditation or not. नियमित बैठते बैठते धीरे धीरे ध्यान लगना चालू है। So just sit in meditation regularly, and gradually you will start going into meditation. तो जो हो गया। अब भविष्य में कोई भी विशुद्धि के विचार आए ना, आत्मग्लानि के, तो अपने आप को अलर्ट करो कि ये मेरे आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। So whatever has happened, it's in the past, but from now on, don't, Yes. whenever you get any thoughts, guilty feeling thoughts, then just remember, become aware that this could be an obstacle in my spiritual progress. बस और क्या। There's nothing else. आपकी कृपा में स्वामी जी ने दिन जब से 2020 ऑनलाइन शेड्यूल करी, एक भी दिन मिस नहीं किया है। एवरी डे रेगुलर मेडिटेशन में बैठती ही हूँ, और आपने मुझे लास्ट टाइम मार्गदर्शन किया था कि आपके अंदर जो आत्मा है उसी को परमात्मा समझ के आगे का मेडिटेशन का जर्नी कंटिन्यू करो, तो उसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। जय बाबा साहब। खुश। So she said that she has been meditating regularly every day. And the last time she had asked a question in a program, Swamiji had guided that believe that your own soul is your Paramatma and meditate that. So she's very grateful. गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे अजमेर की जो गुरु पूर्णिमा थी वो मुझे अटेंड करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ, पर मैं जब घर आई तब मुझे बहुत मतलब खूप उष्णता जाणवत होती, पर मुझे फीवर नहीं था, तो ऐसे क्यों हो रहा था? Now her question is that she was fortunate enough to attend the Guru Purnima in Ajmer, and when she returned back home, she felt a lot of heat in her body, but it wasn't like she had fever, but she just had a lot of heat. एक्चुअली क्या है, गुरु पूर्णिमा में चित्त शुद्ध हो गया, वो शुद्ध रख नहीं पाई ना। So what happened is that in Guru Purnima, your chit was purified, but when you went home, you were not able to keep it pure. इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा आओ ना, तो उसके बाद में सीधे घर जाओ, तो तुम्हारा चित्त कम से कम इधर उधर जाए। So that is why I say that whenever you come for programs like Guru Purnima, after the program, go home straight, so that your chit will not wander here and there. ऐसा ना कई साधकों के साथ होता है कि घर पे बैठ के ध्यान करते हो, ध्यान करते करते 6 महीने में चित्त खूब स्ट्रांग हो जाता है। So this happens to many sadhaks that they meditate at home regularly every day, and after meditating regularly, after 6 months, their chit becomes very strong. लेकिन दूसरों में चित्त डालने की जो आदत है पुराने, वो नहीं जाती ना, तो दूसरों में चित्त डालते तो क्या होता है, उनका कचरा ले लेते उनका। But their habit of putting their chit on other people is not gone yet. So what happens is that they have a pure chit and they put that chit on other people. Then they get the garbage from the other people and receive. गुरु पूर्णिमा में जो भी स्थिति मिलती है ना, उस स्थिति को संभाल करके रखो ना, उसको इधर उधर चित्त डाल के नष्ट मत करो। So whatever state you get during Guru Purnima, conserve that and look after it. Don't waste that energy. गुरु पूर्णिमा से और घर जाने के बीच में कहाँ चित्त डाला याद करो, तो मालूम पड़ेगा। So just remember that when you left Guru Purnima and before you got home, where did you put your chit on those different places? जो कुछ प्राप्त किया था वो सब लुटा के आ गए। So whatever you had received, you spent it all. अब जो हो गया, अभी तो भी याद रखो कि चित्त इधर उधर मत जाने। So whatever has happened, but from now on remember that don't put your chit on. तो जो भी अच्छा स्थिति प्राप्त हो ना, उसको मेंटेन करके रखो। So whatever good state that you remain, you maintain that. जैसे बोलते हैं ना, शिखर पे चढ़ना से ज्यादा कठिन है शिखर पे बने रहना। So it is said that it is harder to remain at the peak than it is to get there. और अपने थोड़े विचारों पे नियंत्रण करो, तुम विचारों के माध्यम से इधर उधर चित्त डाल दो, खूब विचार आते। So control your thoughts. It is because of your thoughts that your chit keeps wandering here and इतने there. विचार क्यों करती हो? Why do you get so many thoughts? स्वामी जी,
और इस उम्र में इतने विचार आ रहे तो अजीब होगी तो क्या होगा? So in this young age, you get so many thoughts. What will happen when you grow older? विचारों पे नियंत्रण करो ना, विचार को करो मत, विचारों को देखो. So control your thoughts. Don't think, just observe your thoughts. जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसा होगा. The more you practice, the more it will become possible. काय के विचार आते ज्यादा? What type of thoughts do you get? मैं जो दिन भर मैं जो करती हूँ वो मैं रात में या मेडिटेशन करने के बाद मुझे उसके विचार आते हैं कि मैं ऐसा जो मैंने किया था ये करने से अलावा मैं कुछ और करती तो और अच्छा होता, ऐसे विचार आते रहते. So she keeps thinking that after the day is gone, then whatever she's done during the day, she has thoughts about those things, actions that she took, and she gets the thoughts that she could have done something differently and could have done better. दूसरा ना, वर्तमान में जो वर्तमान का प्रत्येक क्षण में हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं. Live in the present. Every moment of the present creates our future. तो वर्तमान में अच्छे विचार करेंगे, जो स्थिति बनाएंगे ना, निर्विचार का स्थिति रहेगा, तो वही निर्विचार का स्थिति हम आगे निर्माण कर रहे हैं. So if our state is very good, if we are in a thoughtless state in the present, in the good state, that creates a good future. अच्छे विचार करो तो भी अपनी एनर्जी खर्च होती है, बुरे विचार करो तो भी एनर्जी खर्च होती है. We spend energy if we are thinking positive thoughts, and we spend energy when we are thinking negative thoughts. केवल निर्विचार का स्थिति वो है जिसमें अपनी एनर्जी बचती है. So it is only in the thoughtless state that we are able to conserve our energy. तो किसी भी प्रकार के कोई विचार मत करो, ना आगे के ना पीछे के, कुछ प्रेजेंट में रहो. So don't think about anything, not backwards or forwards. Just remain in the present. अच्छा है, कम उम्र के अंदर इस मार्ग में आए ना, तो धीरे धीरे प्रगति करने की तुम्हारे पास में खूब उम्र बाकी. So it is good that you have come onto this path at such a young age. So you have your life ahead of you to progress in this. सब ठीक होगा. Everything will be fine. Thank you, Swamiji. गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन. गुरुदेव, मेरा प्रश्न औरा शास्त्र के बारे में है. पिछली बार जब सिंगापुर रिट्रीट में हम आए थे तो लॉरेंस ने सबका ऑरा स्कैन करके रिपोर्ट बना के भेजा था, जिससे बहुत लोग एक्साइट हो गए थे. और जैसे आपने बताया था कि आप ऑरा शास्त्र पे काम कर रहे हो, तो कृपया करके मेरी और कई साधकों की इच्छा है, अगर उस पर कुछ आप और अपडेट दे, और कहीं आगे लाखों लोगों को जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, जिस पे आप काम कर रहे हो, अब जब वो समाप्त होगा तो हजारों को फायदा होगा. तो मुझे दिली इच्छा है कि कुछ उसके बारे में आप बताएं. This question is about the Aura Shastra, the book that Swamiji is writing on the aura. So he's just asking for some update on that. नहीं, ओरा शास्त्र का कार्य इतना आसान नहीं है. So the work of the Aura Shastra is not that easy. उसमें ना 18 करोड़ कॉम्बिनेशन है. There are 18 crore combinations of तो that. एक आईटी की टीम उसके लिए मदद के लिए लगी हुई है. So there is an IT team that has been engaged to help with that work. वो क्या है थोड़ा सा बता दो. And I will explain that to you. देखिए, जैसे आप मशीन के ऊपर गए और मशीन पे है आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और नाभि चक्र पकड़ा हुआ है. So for example, you got your aura check through a machine, and the result was that it's showing that your Nabhi chakra, your Swadhisthana chakra and Muladhara chakra are blocked. लेकिन ना वो मशीन ये नहीं बताएगी कौन सा चक्र पकड़ा था जिससे बाकी दो चक्र पकड़े. But the machine cannot tell you that which chakra was the first one to get blocked that has caused the other two to be blocked as well. तो वो 3 चक्रों का कॉम्बिनेशन लेके अगर आप ओरा शास्त्र में देखेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा मूल चक्र कौन सा. So when you take the combination of those 3 chakras and then you refer that to the Aura Shastra, then from there you will come to know what is the core chakra that was और उसके first बाद blocked. में उसको दूर करने के उपाय भी उसमें लिखे रहेंगे. And then in that Aura Shastra, there will also be solutions on how to clear and strengthen your chakras. जैसे भृगु संहिता का शास्त्र है ना,
उसी टाइप का ये बनने का चल रहा है. So it is just similar to the Bhrigu Sahasra, the text, the scriptures. It is in a similar manner. एक ना भृगु संहिता करके एक शास्त्र है, उसके अंदर जैसे आपने आपकी जन्म कुंडली देखी ना, उसके बाद में जन्म कुंडली मिलने के बाद में उस पर लिखा रहता है 13 नंबर पेज. फिर 13 नंबर पेज पे जाओगे ना तो आप पूर्व जन्म में क्या थे उसका विवरण रहेगा. So there is a text called Bhrigu Samhita, and in that you take your birth chart, and your birth chart you find that in that text, and then it will reference to a page, and then if you go to that page number, for example page 13, and then you go to page 13, it will have everything about your past life written in it. तो What kind of life you had. तो उसी टाइप का ये शास्त्र बनने वाला. So it is in the same way that. अब इसमें क्या प्रकार है, जैसे जैसे अध्ययन करते हैं ना एक एक नई नई चीज मालूम होती है. So just as we continue to study this, then we come to know new things every day. जैसे आप सब लोग बैठे हो ना, आप सबके पीछे मुझे कोई ना कोई दिखता है. Just as you are sitting here today, I can see some another person behind each one of you. अच्छा, उसके फिर 3 प्रकार है. And there are there could be 3 possible reasons for that. पहला प्रकार है किसी आत्मा का इफेक्ट आपके ऊपर है. It could be that there is another soul's effect on you. अच्छा, लेकिन ये पॉइंट कब खत्म हो जाता है, सभी के ऊपर थोड़ी आत्मा का इफेक्ट हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट खत्म हो गया. But it is not possible that every single person here has the effect of another soul on them. So that point is also not valid. दूसरा, अगर मैं देखूं कि आपके पीछे जो दिख रहा है वो रोज वही व्यक्ति दिखता है, तो एक ही व्यक्ति पे आपका चित्त रोज रहे ये जरूरी नहीं ना, इसलिए वो भी पॉइंट खत्म हो गया. And the second point, it could be that that person I'm saying is the person on whom your chit is, but it couldn't be that your chit is on the same person every single day. So that point is also not valid anymore. फिर तीसरा पॉइंट एक ही रहता है, वो है कि आपका पूर्व जन्म का शरीर है. And the third point is that it could be that the influence, the physical, the body of your past life. और कई बार वो इतना स्ट्रांग रहता है कि उसके प्रभाव में भी हम कुछ काम कर जाते. And sometimes it is so strong that we do some work under the influence of that. कई बार आप बोलते हो कि नहीं, अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं था, ये मैंने करना ही नहीं था, पता नहीं कैसा हो गया. Because sometimes it happens that you think that I didn't even want to do this, and then it just happened through your hands. तो ऐसे कार्य वो भूतकाल के शरीर के प्रभाव के कारण होते हैं. And such actions happen under the influence of the past lives, the effects of the past life. इसलिए सभी कार्यों के लिए अपने आप को जवाबदार मत मानो. So do not hold yourself responsible for every single तो कई कार्य ऐसे होते हैं जो दूसरे के प्रभाव में भी होते हैं. So there are some actions that you may take or some things that you do that is under the influence of others. तो उस पे काम चल रहा है, धीरे धीरे होगा. So the work is ongoing on that Aura Shastra, and gradually it will progress. एक आईटी की बड़ी टीम है, उस पे वो काम कर रहा है. There is a big IT team that is working on it. Next question. Baba Swami, Swamiji and Guru Ma, from the bottom of my heart, thank you for everything. And the question is about totally surrender. If you can help me with that, Michi. Can you clarify your question, please? Could you help me with surrender and how totally surrender happened? स्वामीजी, उनका प्रश्न ये है संपूर्ण समर्पण के बारे में, क्या आप उनको समझने में मदद करेंगे? क्या? संपूर्ण समर्पण के बारे में. क्या क्या? वो समर्पण की भावना. हाँ. वो उसके बारे में आप उन्हें ज्यादा जानकारी देंगे? भावना तो अपनी खुद की निजी रहती है. Do you want Swamiji to explain what it is to you, or can you just clarify your question? How can I fully surrender? अच्छा, उनका प्रश्न ये है कि वो समर्पण कैसे कर सकते हैं? आत्मग्लानि छोड़ के. Let go of the feeling of guilt. आपके अंदर कुछ कमी है क्या? Is there anything lacking within you?
I don't know, Swamiji. नहीं, आपको तो मालूम है ना क्या कमी हो। You should know what is lacking within you. एक्चुअली क्या रहता है, वो अगर फील अपने अंदर रहा तो फिर अपने को वो आगे नहीं बढ़ने देता। So if that feeling is within you, that something is lacking, it does not let you progress. तो वो कम करो भाव ना, तो ऑटोमेटिकली फिर समर्पण भाव बढ़ जाए। So reduce that feeling, or stop feeling that there's something is lacking within you, and then automatically you will start progressing. एक्चुअली समर्पण का आखिरी उद्देश्य क्या है, आप आपके गुरु बने। So the ultimate goal of Samarpan is that you become your own guru. और परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा आपके भीतर है। ये भाव जितना स्ट्रांग करोगे, जितना मजबूत करोगे, फिर कोई आत्मग्लानि नहीं रहेगी। So Paramatma is not outside, Paramatma is within you, and the more strongly you believe that, and automatically the feelings of guilt will reduce. दूसरा ना, आत्मग्लानि भी अहंकार का ही दूसरा पार्ट है। So the feeling of guilt is the other side of the coin, and the other side is the ego. देखिए, मेरे कारण हुआ है, मैं उसका जवाबदार हूँ, ऐसा अपन जैसे फील करते हैं, तो वो भी ईगो के कारण ही है। So when we are thinking that I have done this has happened because of me, then that also creates ego. इतना ऐसा स्विंग करता है, कभी अहंकार में जाता है, कभी आत्मग्लानि में आता है, कभी अहंकार में आता है, कभी आत्मग्लानि में आता है। So the chit is like a pendulum; it swings from one end to the other. So one end is sometimes it's feeling guilty, and sometimes has the feeling of ego. तो आत्मग्लानि का भाव मत आने दो, समर्पण खुद ब खुद हो जाए। So do not let the feeling of guilt come within you, then automatically the surrender will come. ठीक, नेक्स्ट। जय बाबा स्वामी, जय गुरु महाराज, जय देव। हाँ, आपने इतना सब कुछ दिया, उसका बहुत 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 शुक्रिया। आप, मैं मांगते मांगते थक गया, आपकी तरफ से अभी भी आए जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। अच्छा, मेरा प्रश्न 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा फटाफट। सबसे पहला प्रश्न, अभी आपने जैसा बोला कि आप जब यहाँ आए और में, तो आपके अंदर की आत्मा से कनेक्ट करें, तो उसका सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, एकदम फटफट कैसे कनेक्ट करें ये बताइए। तो दूसरा प्रश्न है, इनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई आ रही? बाबा ऐसे बोलो। हाँ, चलेगा। वो ना इसको होता है, और There's an echo, so Swamiji can't hear properly. सबसे पहला प्रश्न है, में तो आपकी आत्मा से कैसे फटाफट कनेक्शन कर दे? आंखें बंद करके। His first question was that when we come in your proximity, क्योंकि आंखें खुली रहेगी तो क्या कपड़े दिखेंगे, क्या बोल रहा हूँ दिखेगा, ऐसा वो दिखेगा, सब दिखना बंद हो जाएगा। so this first question was that when we are in your proximity like this, what is the quickest way of connecting with your soul? You said to connect to your soul, and Swamiji's response is by closing your eyes, because when our eyes are open, then we are looking at the clothes he's wearing, and so you just shut down all of your senses, all the departments. दूसरा प्रश्न है, वाइब्रेशन आ रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं, जबान पे आ रहे हैं, जहाँ पे ध्यान जा रहे हैं वहां पे आ रहे हैं। आप कभी कभी तो बिना कुछ करे भी आते हैं, जैसे ध्यान जाता है हाथ में जाता है, जहाँ पे भी ध्यान जा रहा है वहां वाइब्रेशन आना चालू हो गया। अब उसके आगे क्या करना है, उसके आगे की क्या प्रोसेस है? ध्यान तो करना ही है, सामूहिकता में ध्यान करना है, मगर उसके अगर आगे कोई और आपका मार्गदर्शन हो तो बताएं। And his second question is that wherever his attention goes, he feels vibrations. So whether they're in his hands, at the crown of his head, even on his mouth, on his tongue, he gets vibrations. So the question is that what is the next? What is next after that? पुराने जमाने में ना जो कार आती थी उसमें गियर बदलना। In the olden days, there was the cars were manual gears where you had to change the gears manually. तो उसी प्रकार से कुछ मेडिटेशन ऐसे रहेगा ना, ये कोर्स, इसके बाद में ये एडवांस कोर्स, और ज्यादा पैसे का और बड़ा कोर्स, ऐसे कुछ भी कोर्स इसके अंदर नहीं। So there are some meditation techniques that are being taught out there that have different levels of courses. So first you do a entry level course, then an advanced course, then the next course. But we don't have any of that in our method. समर्पण ध्यान जो है ना, वो एकदम बिना
गाड़ी है, उसमें गियर रहते नहीं, इसके लिए So Samarpan meditation has no gears. It just has an accelerator and it just keeps going. तो ये गियर बिना की गाड़ी है, So this is a car without any gears. इसमें ना सब ऑटोमेटिक होता है, Everything happens automatically. और जितने भी लोग पहुंचे हैं वो सिर्फ इसी मार्ग से पहुंचे, यही करते करते पहुंच जाते। And all of those people who have reached and attained that state, they have attained it in the same way, just doing this. वाइब्रेशन पे रखते हो, धीरे धीरे सारी प्रगति इसी में हो जाएगी। So continue to meditate regularly and continue to keep your chit on the vibrations and automatically you will progress. नहीं, कुछ भी नहीं। There is no advanced course or anything after this. तीसरा प्रश्न, कनाडा अमेरिका कब पधार रहे हैं? His question was, when are you visiting Canada, USA, North Americas? अभी तारीख निश्चित नहीं हुई, देख रहे हैं। We have not confirmed the dates yet, but we will see. गुरुजी प्रणाम, गुरुमा प्रणाम। गुरुजी, जीवन में सफलता प्राप्त कैसे करें? ध्यान कर। His question was, how do we attain success in life? And Swamiji has replied through meditation. गुरुजी, नियमितता नहीं आ रही है। नियमितता नहीं आ रही है। वही तो नियमित होनी चाहिए, वही तो बता रहा हूँ इतने दिन से। और वो मेरे को भी महसूस हो रहा है, वही प्रॉब्लम है नियमितता का। तो 12 साल में तो आदमी कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है। So he said that he is not able to get regularity in his meditation. So Swamiji said that is the problem, isn't it? I have been trying to explain to you that regularity is important, and with regular, नियमितता इसलिए नहीं है, हमने उसको महत्व नहीं दिया। and it is not regular because we have not given it the importance that it deserves. देखिए, खाना खाते हो कि Do you eat every day or not? तो वो शरीर के लिए आवश्यक है। This is necessary for the physical body. बिल्कुल ठीक होता है, ध्यान आपके आत्मा के लिए आवश्यक। And in the exact same way, meditation is important for your soul. ध्यान आत्मा का भोजन है। Meditation is the food for the soul. तो अगर शरीर को स्ट्रांग करना चाहते हो तो स्ट्रांग चीजें खाते हो, आत्मा को स्ट्रांग करना चाहते हो तो ध्यान करना चाहते हो। So if you want to make your body strong, then you eat healthy food. So if you want to make your soul stronger, you need to meditate. हम देखो ना, मैंने भी क्या किया, सिर्फ आधा घंटा ध्यान किया, बाकी कोई क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं, दिन भर भेजे देता हूँ। So just see, what have I done? I just do meditation regularly, 30 minutes every day, and then I do the rest of the work for the rest of the day. आपका परिवार तो 4-6 लोगों का होगा, मेरा परिवार तो लाखों लोगों का है, उसके बावजूद भी वो आधे घंटे में कोई भी इसमें नहीं है। So your family might be of 4 or 6 people. My family is of thousands of people around the world. And even then, in those 30 minutes when I sit for meditation, there is no one there. गुरुजी, जब ध्यान करते हैं तब सफलता के विचार आते हैं कि अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है, तो क्या इस विचार को उस अनुभूति समझना चाहिए या इसको भी बाहर से देखना चाहिए? So he said that whenever he sits for meditation, he does get the thoughts of success, that he is getting successful, and are those thoughts an experience in itself, or should we just observe it? एक्चुअली बचपन में ना हमने भक्त प्रहलाद की, भक्त ध्रुव की कहानियां पढ़ी। So in childhood, may have heard the stories of Bhakta Prahlad and Bhakta Dhruv. जो वो ध्यान करने बैठता है, तूफान आता है, आंधी आती है, आग लगती है। So when he used to sit with the stories of Bhakta Prahlad, that when he used to sit for meditation, whether there was a storm, rain or fire, यानी वो सब बातें उसको डिस्टर्ब करने के लिए आती। so there were a lot of natural things that were happening, like the storms and winds and rain, to disturb his meditation. इसलिए ध्यान करने वालों को भी इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। So even those who are meditating need to be very alert of these things. कोई भी घटना आपके जीवन में ऐसी घटी जो आपके औकात के बाहर है, तो समझ लो अलर्ट हो जाओ। So whenever there is any incident that happens in your life that is beyond your capabilities, then become alert very quickly. आपके जीवन में एकदम अचानक कोई भौतिक प्रगति हो गई तो एकदम अलर्ट हो जाओ, क्यों? यहाँ से आप डिसअपॉइंट होने के चांसेस। If you have progress that is unusual in your life, that happens very quickly beyond your capacity. अपना एनालिसिस करो ना,
मेरी औकात है कि इतनी सफलता पाने का नहीं है, अचानक मिली है, इसका मतलब ये मेरे को डाइवर्ट कर सकती। So this has the potential of distracting and diverting you from your practice. Just think of it, analyze it yourself, that do I have the capability of this much success? If the answer is no, then become very alert. देखिए ऐसे प्रगति साधकों के जीवन में आती है, ऐसे नहीं मेरे भी जीवन में आई। It is not that only these experiences come in the sadhak or this kind of success comes in जो sadhak life. पुराने साधक है ना उनको मालूम है, कई सालों तक दांडी का दांडी, एक आश्रम के अलावा कोई आश्रम नहीं। It has happened in my life as well. So those sadhaks who have joined from the beginning, they will know that for many years we only had Dandi ashram. अचानक एक साल में 5-6 आश्रम खुल गए। And suddenly in 1 year we had 5 to 6 ashrams. तो जैसे खुले ना वैसे मैं समझ गया कि ये फिर परीक्षा है, इसमें अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। So just as we had those 5 to 6 ashrams were opened, I became alert. तो अचानक आई हुई सफलता भी हमारे मार्ग में बाधक है। I became alert that I should not be attached to this. And so when there is sudden success, we also should be very alert. वो भी हमको ध्यान मार्ग से भटका सकता। This could divert us from our practice of meditation. अपना चित्त ना वो सफलता की तरफ, प्रगति की तरफ नहीं होना चाहिए, अपना चित्त ध्यान पे एकाग्र रहो। So our chit should not be on the success, our chit should be on meditation only. मैंने जिस ध्यान के कारण ये प्रगति हुई वो उसी पे अपना चित्त होना चाहिए, वो प्रगति पे नहीं। So the meditation that is the cause of our success, our attention should, our chit should just be on that meditation, not on the results of it. जिस ध्यान के कारण हमको अच्छी अनुभूतियां हुई, हमारा चित्त वो अनुभूतियों पे नहीं होना चाहिए, ध्यान पे होना चाहिए। So we have gotten good experiences because of that meditation. So our chit should not be on those experiences, but it should be on the meditation. सफलताएं, अनुभूतियां ये हमको ना भटका सकती। So these successes and these spiritual experiences, they can divert and distract us. अपने ध्यान की एकाग्रता ध्यान भी रखो। So just focus with your chit on the meditation. Oh, next. Baba Swami. Next question, please. कितना टाइम हुआ देखो तुम, घड़ी यहाँ रखी नहीं। मेडिटेशन लेने के बाद में इसलिए ध्यान करना है स्वामी। ध्यान इसके बाद ध्यान करना है। हाँ. So we will take last question, please, because we also want to do meditation after. So please, last question. प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरुदेव। प्रश्न ये है कि नियमित ध्यान भी हो रहा है, अनुभूतियां भी खूब रहती हैं, लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल कब खत्म होता है? क्या प्रश्न है? मतलब जो स्थिति है वो बार बार ऐसे क्यों लगता है कि कभी किसी दिन अच्छी फिर बुरी, जो आप कहते हो ना सांप सीढ़ी का खेल जो चल रहा है, वो वैसा सा महसूस होता है? सचमुच भी ऐसा ही होता है ना, अपना ध्यान उधर नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, खूब जैसे खूब अच्छी अनुभूति हो गई तो अपने अंदर ईगो नहीं आना चाहिए कि कितनी अच्छी अनुभूति हो गई, फिर हमारी अपेक्षा निर्माण हो जाती है ना कि आज भी वैसी होना चाहिए, तो फिर वैसी नहीं होगी। So his question was that many times we experience what Swamiji has just talked about today, that we have a good state and some days we have a bad state and good experience and bad experience. Why does this happen? It's like snakes and ladders, right? So Swamiji said this happens, it's normal, but our attention, our chit should not be on that, because sometimes we may get a very good experience and are in a very good state. Then at that time we should not get the ego that I have a good state. ये ना आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्र में। But not only in the spiritual field, in every other field as well. देखिए एखादे साइंटिस्ट से खूब बड़ा रिसर्च हो गया, उसको पूछो तूने किया क्या, बोले नहीं मैंने नहीं किया, मैं रोज रेगुलर प्रैक्टिस करता था, आज पता नहीं क्या हो गया। Yeah, so sometimes you will find that a scientist who had been doing some research and suddenly he will find a discovery, a very big discovery, and you will ask him that did you do this or did you discover this, and he will say no, I used to practice every day and then it just happened one day. रेगुलर जो प्रैक्टिस होती है ना वो शरीर से होती है, और वो जो घटना घटती है वो शरीर से नहीं घटती है, अचानक हो जाती है। So the regular practice happens through the physical body, but that incident that happens, it is not at the physical level. वो घटना उस दिन घटती है जिस दिन शरीर बाहर नहीं रहता। Because that is not at the physical level, it happens automatically and suddenly one day. And because it happens only when the body consciousness ends. मैं मेरा ही अनुभव बताता हूँ ना, हिमालय का समर्पण योगी जो पुस्तक लिखते कि नहीं, लिखते समय मैंने कैसे लिखी जाती है वो मेरा ही नहीं पता है। So I will share my experience with you that when I write my book, the Himalayas, the Samarpan Yoga of the Himalayas, कुछ नहीं, how the book is written, I don't even remember that.
एक पैड और पेन इधर लेके बैठता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, उठने के बाद में जो लिखना चालू करता हूँ, फिर 2 घंटे तक लिखते रहता हूँ। So I just sit with a pad, writing pad and a pen, and I wake up in the morning at 3:30 a.m. and I sit to write, and then whatever is written, it just flows for the next 2 to 3 hours. फिर वो 2 घंटे लिखने के बाद फिर रिलैक्स होता हूँ, फिर लैट्रिन जाता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, एक्टिविटी बाद में चालू होती। So then after those 2 to 3 hours, after I have written, I become very relaxed and I feel this sense of relaxation. And then it is after that that I will go to the bathroom or do anything. All the activities start after that. और दूसरा उसमें जो लिखा गया है, अब मेरे को पूछो तो मेरे को नहीं मालूम। And if you ask me what did I write during that period, I don't even remember it. तो जो ये घटनाएं घटती ना, वो शरीर के स्तर पे नहीं होती, अचानक होती। So this doesn't happen at the physical level. It just happens suddenly. जब अपना शरीर भाव समाप्त हो चुका है, When our body consciousness comes to an end. वैसे ही ध्यान में जब हमारे यहाँ जीवन में कोई अच्छा अनुभव होता है ना, वो अनुभव तब होता है जब हमारा शरीर भाव नहीं रहता है। So even in meditation, when we get a very good spiritual experience, it happens at that moment when our body consciousness completely. आप याद करो ना, कभी अनुभूति हुई होगी, वो अचानक हो गई, कुछ नहीं, सहज आप बैठे थे और अनुभूति हो गई। So you may remember, just think about it yourself, that sometimes you may have a spiritual experience, a very good one, but it happens suddenly. और बाद में तुम कितनी भी अपेक्षा करो कि वैसी अनुभूति होना चाहिए, वो होती नहीं। And later you will try to get that same experience, but you will never get it. यानी जो कुछ घटता है ना, वो शरीर भाव समाप्त होने के बाद में घटता है, शरीर से कुछ नहीं होता। So whatever happens, that incident happens when the body consciousness comes to a complete end. It doesn't happen when there is a feeling of body consciousness. ठीक है, अब हम ध्यान करेंगे। स्वामी, आखिरी एक प्रश्न है। ले लो। Yeah, one last question. परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, मेरा प्रश्न आध्यात्मिक प्रगति के बारे में है। गुरुदेव, आप हमेशा ही कहते आए हैं कि पति पत्नी का संबंध यूट्यूब तरीका है, और दूसरी बात ये भी कहते आए हैं आप कि जितना हो सके सामूहिक छत्र के नीचे रहा करो आध्यात्मिक प्रगति के लिए। गुरुदेव, मेरे पति हाल ही में उन्होंने ध्यान शुरू किया है, और साथ में सोते वक्त सोने से पहले हिमालय का समर्पण भाग तो पढ़ के भी सोते हैं। जब भी कोई सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम रहता है और मैं जब भी उन्हें मेरे साथ आने के लिए बोलती हूँ, पूछते हूँ, तो वो सीधे मना करते हैं। सामूहिकता में आने से हिचकिचाते हैं, मना करते सीधा। तो ऐसे संभव में हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। So her question is that Swamiji always tells us that the relationship of a husband and wife is like a YouTube. And he also says that we should always be under the umbrella of collectivity. So in her case, her husband reads the Himalayan Samarpan Yoga at night before sleeping every night. But whenever she asks him to go to collective meditation, he resists and always says no. So in such scenario, how can we progress spiritually? एक्चुअली पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना है। Actually, the husband should not try to change or improve the wife, and the wife should not try to change the husband. तो जो कुछ होता है ना, वो उनको उनकी इच्छा से करने दो ना। So whatever he is doing, let him do it as per his wish. आप क्यों अपेक्षा करते हो कि वो आना चाहिए, वो होना चाहिए? Why do you have this expectation that he should accompany you? जब उनकी इच्छा होगी तो आएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं आएंगे। Whenever it is his wish, he will come, and when it's not, he will not. परमात्मा ना प्रत्येक आत्मा को स्वतंत्रता देता है। So Paramatma gives every soul independence. तो वैसे जब उनकी इच्छा होगी तो आएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं आएंगे। So whenever it is his wish, he will come. When it's not his wish, he will not. और पति पत्नी पे से मेरे को याद आया कि बोलते हैं ना, पति पत्नी मतलब जीवन साथी। So talking of husband and wife, I remembered something. लेकिन सचमुच जीवन साथी है क्या? That they say that husband and wife are life partners, but are they truly partners for life?
कई बार पत्नी चली जाती है, कई बार पति चला जाता है। Sometimes the wife will pass on before the husband. Sometimes the husband will pass on before. तो जीवन साथी कौन है? आपके आत्मा। So who is the true life partner? It is वो your आपके soul. अंतिम क्षण तक आपके साथ रहती। Your soul is there with you till the very last moment. दूसरा, पत्नी चली जाती है ना तो पति की पूरी दुनिया डूब जाती है। So when the wife passes on first, the husband's entire life comes to an end. अच्छा, दुनिया डूब जाने के बाद में वो ध्यान मार्ग में आता है? नहीं, वो एकांत में बैठे रहेगा। So after that, does he come into the path of meditation? No, he will sit alone. हमने को दिखता है वो एकांत में बैठा है, एकांत में नहीं बैठा, वो पत्नी की यादों में बैठा हुआ है। And we think that he's sitting in isolation, but he's not sitting alone. He's actually thinking of his wife. माने पूरा विश्व डूब गया। So his entire world has ended, and yet he doesn't come onto the path of meditation. And it is the same with the wife. So when the husband dies, the wife, does she come into this path? No. She will then divert her chit to her grandchildren, her children. So they say that husband and wife are life partners, but are they actually partners for the whole life? No. Your true life partner is your soul. Your soul will be there till your last breath. So you are a separate soul. He is a separate soul. So do not have any expectations from him. हो गया समझ? We will now meditate. देखिए, कुछ हम बोलते हैं ना, वो अगर सच में हम उतने भाव से बोले, उतने से बोले तो उसका ज्यादा प्रभाव। Whatever we say, the more feeling with which we say it, the effect will be better. So as we say, I am a holy soul, then believe I am truly a holy soul, that you have taken birth in different countries, different languages, different castes, and yet your holiness is maintained. And when we say I'm a pure soul, then forget of from which country you have come, from what caste you are, what language you speak, even forget whether you're a man or a woman. The more you are able to forget all of these things, differences, the more effect you will feel. Now place your right hand on the crown of your head. Press it gently and rotate it in a clockwise direction 3 times. Now stabilize your chit at the crown of your head and very slowly bring your hand down. Now chant the mantra with Swamiji. I am a holy soul. I am a pure soul. I am a holy soul. I am a pure soul. I am a holy soul. I am a pure soul. Now stabilize your chit at the crown of your head and meditate for a while.
We will pray to Paramatma. Oh Paramatma, please grant me self-realization. Oh Paramatma, please grant me self-realization. Oh Paramatma, please grant me self-realization.
We will pray to Paramatma. We pray for the continuous progress of Singapore. This is our pure wish. We pray for the continuous progress of Singapore. This is our pure wish. We pray for the continuous progress of Singapore. This is our pure wish. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव ने आज हमें काफी समय दिया है प्रश्नोत्तरी सेशन के लिए। बहुत सारे साधकों के प्रश्नों के अमूल्य मार्गदर्शन हमें गुरुदेव से प्राप्त हुआ है और हर एक प्रश्न के लिए भी गुरुदेव ने हर एक साधक के लिए काफी समय दिया है। बहुत 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 धन्यवाद। जिन साधकों को आज प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला उन्हें कल भी मौका मिल सकता है। अब हम सब शांति पाठ करेंगे। We are just grateful to Swamiji for the time he has given us and answered individual questions. For those who did not get an opportunity to ask question today, there will be another chance tomorrow as well. ओम शांति अंतरिक्ष पृथ्वी शांति गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान करेंगे। Please remain seated. कृपया शांति बनाए रखिए। गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान वंदनीय गुरु यहाँ से धन्यवाद।
कृपया आप सभी साधक यहाँ ही बैठे रहे. Please remain seated. We have a few announcements to make, so please remain seated. कोई भी अपनी जगह न छोड़े. कृपया अपनी जगह पर बैठे रहे. शांतता रखिए. Please remain seated. Our program is not over yet. We have not completed our program. Please remain seated. आप शांति बनाए रखिए. अभी एक्चुअली हम एक एक्टिविटी कंडक्ट करने जा रहे हैं जो कि एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी है जिसमें हम सभी देशों से आए हुए कंट्रीज के लोगों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे. आज हम सबके बीच यहाँ पर 14 देशों के सदस्य उपलब्ध हैं. So we are going to please, you can sit in your seats now. Those who are sitting down, we are going to have an activity now. We have people here present from 14 different countries. So we are going to have a small activity of introduction. हमारे वॉलेंटियर आपके पास आएंगे. आप में से जिस किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन देना है, आप कहाँ से आए हैं, चैतन्य महोत्सव में आने का आपका मेन उद्देश्य क्या है, ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ खींच लाई है, आप उसके बारे में बता सकते हैं. हर एक कंट्री के एक सदस्य को यह मौका मिलेगा. So कम फर्स्ट बेसिस पे. So we have some volunteers who will come around, and one person from every country will get the opportunity. And for those who wish to, you can say where you're from and what is your main purpose for coming to Chaitanya Mohatsav and what you would like to get out of it. पहले हम सबसे ज्यादा सामूहिकता इंडिया की है तो इंडिया से शुरुआत करते हैं. So we have maximum number of people from India. So we will start with someone from India. कोई भी साधक इंट्रोडक्शन दे सकता है. So anyone from India can volunteer. वॉलंटियर्स, सिटिंग वॉलंटियर्स, क्या आप माइक पास कर सकते हैं आगे यहाँ का Mic. I'm using this mic. Okay. Yes. जय बाबा स्वामी. मैं गुजरात कच्छ भुज से हूँ. मैं जस्ट रिटायर्ड हुई हूँ 31/10 को. मैं टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर, और लास्ट 12 ईयर्स से मैं प्रिंसिपल थी. और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, मैं 7 स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो ये लेना नहीं था और कैसे ले लिया था पता नहीं है, पर गुरुदेव को ही सौंप दिया था कि गुरुदेव आप ही संभालिएगा, अब रंक में से राजा बनाया है तो आप ही संभालना. और जैसे मैं रिटायर्ड हुई तो ये सिंगापुर का चांस मिला तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ. तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि मेरे लिए गुरु शक्तियों ने बहुत बड़ा चांस दिया है मुझे, तो मैं गुरु शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. सभी इंडिया के साधकों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ऐसे हम समझते हैं, क्योंकि हर एक को तो इतना समय नहीं दे सकते. सभी इंडिया के साधकों का बहुत बहुत स्वागत. So she just shared her experience that she is retired now and she has got a chance to come to Singapore. So she's very grateful that she got this opportunity to come. So whenever we get such golden opportunity, we don't let it pass, right? So yes, so she got opportunity to come here today. So because we have limited time, we will only, we ask one from every country, please. So she has represented India. So we will move to next country, please. Next, USA से. Next country, USA. Someone from USA, you can raise your hand. Yeah, you can raise your hand. Volunteers will give you mic. जय बाबा स्वामी. मेरा नाम नीलिम भट्ट है और मैं न्यू जर्सी यूएसए का साधक हूँ.
तो मैंने पहला चैतन्य महोत्सव अपनी लाइफ में 2016 का किया था और उसी से लाइव शुरुआत हुई थी। तो जब सिंगापुर का मौका मिला तो मैंने सोचा कि कैसे मिस किया जाए, गुरु माँ और गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान करने का मौका मिल रहा और बाकी सारे नए साधकों से मिलने का भी मौका मिला। तो वही प्राइमरी मोटिवेशन था आने का। धन्यवाद। You can say in English also. Yeah. Jai Baba Swami, everybody. My name is Nilim Bhatt. I stay in New Jersey, USA. My journey started long time ago, but my first real live event was Chaitanya Mohatsav in 2016. So when I got an opportunity, when I heard about coming back to Singapore, it was something which I didn't want to miss, especially when you get to meet all you fellow sadhaks and have an opportunity to meditate along with Gurudev and Guru Ma. So that was my primary motivation. Thank you, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। नेक्स्ट कनाडा। Anyone from Canada? जय बाबा स्वामी। मैं सौमित्र बंडी, यहाँ हमारे कनाडा से कुछ साधक आए हुए हैं। हमें आने का यहाँ मौका मिला, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अरेंजमेंट्स are awesome. Thank you so much. Really appreciate it. It feels that we are right at home, and that's saying a lot. All right. Thank you so much. Jai Baba Swami. Happy to be here. Thank you so much. Welcome to all Canadian sadhaks. Next, UK. UK से कोई साधक आए हो तो okay. Next country, Qatar. जय बाबा स्वामी। मेरा नाम माधवी भट्ट है और हम 7 साधक कतार से आए हैं। हमारा चैतन्य महोत्सव में आने का सबसे बड़ा मोटिवेशन तो पूज्य गुरुमा और गुरुदेव से मिलना ही था। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया में जब भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो तो कतार से कोई न कोई साधक जरूर आए। और अब तक कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं रहा जहां कतार ने पार्टिसिपेट नहीं किया हो, क्योंकि गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जहां एक भी साधक सेंटर से आता है तो वो पूरा चैतन्य सेंटर में लेके आता है। तो हम कोई ना कोई साधक हमेशा चाहते ही है, तो गुरु माँ और गुरुदेव से मिलने का मौका हम कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। धन्यवाद। So she's from Qatar, and there are 7 sadhaks from Qatar attending this program today. So whenever there is a big program, whether in India or overseas, someone from Qatar, from their center, will try to attend that session, because Swamiji does say that if even one person from a center attends a program, then they take back that energy to the center and distributes there. So that is why they have come. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरह से उन्होंने बताया। नेक्स्ट जर्मनी से, एनीवन फ्रॉम जर्मनी लाइक टू इंट्रोड्यूस? यस। Hey, Baba Swami. I'm missing the word. I was so touching that we celebrate Swamiji's birthday like Jesus Christ. Excuse me, can you hold the mic little bit closer? Yes. Now it's better. I was totally touched that this opportunity to celebrate with Swamiji the birthday like Jesus Christ is on the earth. I have the wish that all the sadhaks from Germany bring this energy at home and that it's growing in Germany.
Next country, we will take South Africa. Introduce yourself. Share. Hi, Baba Swami. You can put the mic closer so we can hear. Hi, Baba Swami. My name is Priyanka and I'm from South Africa. There are 3 sadhaks from South Africa, including myself. I recently got a remote job, so that gave me the opportunity to come to celebrate Swamiji's 70th birthday, and I feel so grateful and thankful to be here. And we also have Sri Guru Shakti Dham in South Africa, a temporary one. So everyone is welcome to come to South Africa and also come see the Sri Guru Shakti Dham there. Thank you. Thank you. Next from Australia. Anyone from Australia? We will continue this game for 10 more minutes. So Jai Baba Swami. continue playing so you can. I have a sleeping daughter here. I'm David from Australia. I'm here with my entire family, which is an absolute joy. We're introducing our 3 and 1-year-old daughter to be in Swamiji's proximity for the first time, and Rajni and my first time in 5 years in person. So very excited to be back with the collectivity. Thank you to all the Singaporeans who are working tirelessly behind the scene and the international supporters to make this event. We're really excited to look forward to what unfolds over the next couple of days. And if anyone wants to come and visit, the collectivity is growing in Australia, so there's always a place to stay. Don't be a stranger. Thanks. Thank you, Team Australia. Next, New Zealand. जय बाबा स्वामी। मेरा नाम योगिता है और मैं न्यूजीलैंड से हूँ और हम 4 फैमिली न्यूजीलैंड से आए हैं और अभी 2 ईयर से हमारे न्यूजीलैंड में 3 सिटी में सेंटर चल रहा है और हम सब साधक भाई बहन ऑकलैंड से हैमिल्टन और हैमिल्टन से ऑकलैंड गुरु कार्य कर रहे हैं। और मुझे फर्स्ट टाइम मधु चैतन्य इंडिया में 2007 में लाभ मिला था और उसके बाद मुझे सेकंड टाइम अभी सिंगापुर में मिला। हमने स्वामी जी बोलते हैं ना कि एक बार आप ट्राई करके देखो। हम बिजनेस के सिलसिले में आगे बढ़ते रहते हैं तो उसके हिसाब से टाइम नहीं मिलता, तो स्वामी जी बोलते हैं तो हम अभी इच्छा करके देखे कि हमको इच्छा है जाने की मधु चैतन्य में, तो क्या करें। तो चैतन्य महोत्सव में तो स्वामी जी ने ये लाभ भी दिया हमको कि आप एक बार इच्छा करके तो देखो, सब सही हो जाता है आपके लिए। जय बाबा स्वामी। So she's from New Zealand. There are 4 families from New Zealand who are attending here, and Guru Karya is happening in New Zealand in 3 different cities, and it's a good opportunity to attend a program here in Singapore. So they had the desire to attend Chaitanya Mohatsav,
And like Swamiji says, just make a wish and you can see what happens. So they got a chance to attend here in Singapore. So now we've heard from every country. Switzerland? Yeah. Don't steal my thunder. Okay, we have Switzerland as well. Thanks. Switzerland, anyone? Yes, Jai Baba Swami. My name is Susanne and I'm from Switzerland. And I wish for everybody and myself inner peace and spiritual progress. And I'm very grateful to be here. And the good organization makes it very easy. Thank you, Jai Baba Swami. Okay, we now have UK. People have woken up from sleep, so we will get someone from UK to say as well. Jai Baba Swami, Jai Asmeshwar. My name is Surendra. I'm from UK and been sadhak since 2000 when Swamiji first came to UK. And we have, I think, about 15 centers. We have an ashram as well, and the Murtis there as well. And really glad to be here and meeting people again. And this is the third time I've been here to the retreat in 2015. And you're all welcome to go. The ashram, the Guru Shakti Dham is not open yet. It's going to be, it's almost nearly completed. A few more months and it should be ready. That's it really. Jai Baba Swami. We have Malaysia. Someone from Malaysia, please. Jai Baba Swami, my name is Chandra. I've been practicing meditation since 2009. My late wife is the one who started the center in Malaysia, and she's no more around. I'm sure she's watching from upstairs. But certainly, this is the first time I'm attending this Chaitanya Mohatsav, and it's a special event because it's a 70th Jubilee. I've attended many of the retreats in Goa, and today I see a lot of Goa sadhikas and sadhaks have come. Sure. It's a great place to be because I always believe this. There are no strangers on earth except friends whom we have not met. Certainly, a lot of visitors have come to Malaysia, and we have entertained many of the folks who have called on us. We took them around. But our center is just being rebuilt now because we have moved to another place. My presentation here is like taking back the energies to all my folks there, such that we will have a balanced lifestyle. Thank you very much. Thank you. Anyone from Sri Lanka now? Okay, so we've had all the countries, but we want to hear about the locals. So we now have Singapore. Oh, okay. Ireland से कौन है? नहीं है। Jai Baba Swami. For many years, for various reasons, we couldn't attend Swamiji's birthday in India. Just like we couldn't go to the mountain. But today, the mountain has come to us. This is Guru's grace. Thank you so much, Swamiji. One country remaining, Ireland. Yes. Jai Baba Swami. I'm Ravina Mesri from Dublin, Ireland. I just had I wanted
to attend Chaitanya Mohatsav. I thought 15 days back, and Swamiji has got me here today. So I'm very grateful and very happy to attend this event. Also, I'm very pleased to meet other sadhaks from all over the country. Thank you. Jai Baba Swami. Thank you very much. Any other countries remaining? You can just raise hand and introduce yourself. Okay. Hope we have covered all the countries. Thank you so much everyone for participation. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का सेशन हमने अभी लिया. आप सभी एक ही होटल में रुके हैं, आप वहां भी मिल सकते हैं एक दूसरे को और बातचीत कर सकते हैं. अभी हम आज का सेशन एंड करने जा रहे हैं. आप अभी जब भी हॉल से बाहर जाएंगे तभी आपको बाहर गुडी बैग्स कलेक्ट करने हैं. उसके साथ एक स्वामी जी का बुकलेट है, वो कलेक्ट करना है. और जब भी हम सब नीचे थे और स्वामी जी आए, स्वामी जी ने वहां पे सैंड वाइब्रेट की है, वो सब सैंड भी आपको प्रसाद के रूप में बॉटल में दी जाएगी. तो आप वो सैंड भी कलेक्ट कीजिए. आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपको ये सब चीजें बाहर मिल जाएंगी. उसके बाद आप नीचे जहाँ पे आपने नाश्ता किया था वहाँ आपका डाइनिंग एरिया में खाना भी, भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है. Okay, English. So we are about to end our program today with just a couple of announcements. So before, as you head out, don't forget to collect your goodie bags. So there are a few items in there for you to bring back home. One of them is the sand that's been vibrated by Swamiji, that is in a bottle. So you will get that. So collect that. And then we have dinner.